series, he can just go out there and become the first defender to get 100 tackle points. And look at that. Every time he goes for the attack, Arshit, I have not seen a second line of thought. He's not got a second, moment. A crocodile takes its prey out. So that is how strong he is. I think he's on what, 97 today 93. tackle points? Yeah, so 93. 93, right? So yeah, seven Naveen. tackle points, 7 tackle points every time he's going out and getting. Last couple of matches, he's got 7 tackle points in a match, so it's more than a high five. So I'm sure that he's going to be, getting to that 100 even this match itself. मजा आ जाएगा अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मजा हमारे दर्शकों को आएगा। पेरियार पैंथर्स के लिए नीलगिरी नाइट्स आएगा। दे दीजिए लोकेश गुसलिया को 7 टैकल पॉइंट, बस हमें मुकाबला दे दीजिए और पल्ली के विरुद्ध फाइनल दे दीजिए। बट लोकेश गुसलिया की एक और बात करूं नवीन, ही सेकंड टू नन। पूरी तरह से इनकी अगर हम हाई फाइव की बात करें, इनके सुपर टैकल्स की बात करें तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। और हम क्यों ये रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने बहुत ज्यादा टैकल पॉइंट्स अपने नाम कर लिए हैं। Yeah, totally. And I think it will also be very nice to, call in his coach as well to have a discussion as Puran is right there waiting for us. Puran ji, आज एलिमिनेटर फिर से, और कल का दिन थोड़ा ब्रेक था तो आपने सारे मैचेस को देखे होंगे या थोड़ा डे ऑफ लिया और कबड्डी से थोड़ा दूर चल के टीम कोऑर्डिनेशन बनाने में लगे हुए थे। क्या कर रहे थे कल पहले? यही बस जो अगली टीम आएगी हमारे पास में, जैसे चंबल चैलेंजर आई उसको हम लास्ट में हराया, कोई दिक्कत नहीं। पर नीलगिरी आई है तो इसके साथ अच्छी, इनका डिफेंस अच्छा है, रेटर भी अच्छे हैं, तो हमें उसी के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे थे और हमारी पूरी तैयारी के साथ आए हम। कहीं बाहर थोड़ा घूमने या हवा खाने नहीं गए आप? नहीं कहीं नहीं गए सर हम। Totally focused on eliminator number 4 has to be also. और थोड़ी सी अगर हम रेडिंग के बारे में भी बात कर रहे थे, रोहित यादव को फलजाट हो तो रोहित को आपने कैसे मोल्ड किया, क्योंकि आपकी कोचिंग भी उभर कर आ रही है बाहर। रोहित को आपने इतने अच्छे से मोल्ड किया करके। हाँ, रोहित का यही था कि हमें पहले यही था, हमारे पास लेफ्ट रेटर एक सरदार था, ओनली परफेक्ट लेफ्ट रेटर नहीं था। अभी रोहित के आने से हमारे को बहुत फायदा मिल रहा है और वो हमारा टीम का लीड रेटर बन गया। अच्छा रेटर है, वो हाइट भी अच्छी है और उसकी स्किल अच्छी है, नया रेटर है और अच्छा करेगा वो, हमें पूरा विश्वास है इस मैच में भी वो अच्छा खेलेगा। हर्षित, आई थिंक आप भिड़ेंगे एक अच्छे से लेफ्ट रेडर के विरुद्ध जो सुंदर विश्वकर्णन होंगे, तो अनुज सैनी के खिलाफ वो जा रहे होंगे राइट कॉर्नर में। चलो कॉर्नर में तो कुछ बात ही नहीं है, सब दोनों लोकेश गुसले और अनुज बहुत अच्छे हैं, लेकिन कवर्स का आपका क्या अभी मंजीत का या फिर किस पे ऊपर भरोसा है? क्या चल रहा है आपके मन में? कवर्स में थोड़े से आप पीछे हो। नहीं सर, कवर पे अभी कोई दिक्कत नहीं है, मंजीत आ गया हमारा, फिट हो गया मंजीत। कॉन्फिडेंस नवीन, हम पूरा हमारी कोशिश है कि हम उनके लेफ्ट कोरिडोर को रोकेंगे और जीतेंगे सर। नवीन, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। जाने से पहले एक प्रश्न पूछूंगा पूरन साहब आपसे कि कल हमें नजर आया आपके पास 2 रेडर्स के साथ आप मैदान पे उतरे थे सर। जरूर हालांकि आपको मंजीत की आवश्यकता नहीं पड़ी थी रेड में, बट आज भी क्या सेम फॉर्मेशन के साथ आप जाने वाले हैं, क्योंकि नीलगिरी का डिफेंस अमूमन चंबल के बहुत ज्यादा मजबूत है, तो क्या वो 2 रेडर्स आपके लिए पूरा काम कर पाएंगे? सर सेम फॉर्मूला रहेगा हमारा, और बाकी हमारे पास यदि जरूरत पड़े तो हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन में 2 अच्छे रेडर हैं, रिचपाल भी है, सरदार भी है, अच्छा कर रहे हैं वो भी, हमें जरूरत पड़ेगी तो। और मंजीत भी है, लास्ट टाइम अपने अनुज भी रेड मार लेता है उसका भी हमें कोई टेंशन नहीं है, तो रेडर हो गया हमें कोई दिक्कत नहीं, बस हमारा फोकस डिफेंस पे है। तो ऑल आउट से बचाने के लिए अनुज भी है, जो चिंता नहीं है। आप ऑल आउट के मुकाम पर ना जाए ये हम आशा करते हैं, लेकिन अगर चले भी गए तो अनुज है बचाने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो जीत कर फाइनल्स में मिलेंगे शायद। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। जी हाँ नवीन, तो आई लाइक द मोस्ट कि चंबल चैलेंजर्स कोच में जो आज हम मिस कर रहे थे सुबह, वो कॉन्फिडेंस वो आज पूरन शेखावत में नजर आया और बहुत ही अच्छा कार्य के साथ इन्होंने बताया कि इनकी पूरी टीम तैयार है कॉन्कर करने के लिए नीलगिरी नाइट्स को, बट उतना आसान नहीं होने वाला नवीन। एक हरकुलन टास्क वहां पर होने वाला है, और कहते हैं ना कि ना चाची का ना ताई का, नीलगिरी नाइट्स का डंका बजता है एलिमिनेटर्स में, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नीलगिरी नाइट्स नजर आ रहे हैं। और पिछला मैच जो भी चंबल को हरा कर आए, एस मरीमुत्तु सेल्वम पिछले मैच में सुपर 10। Superb. He's been consecutively getting those Super 10s and Best Raider awards. I think we will go out and watch his, raiding skills and how he goes out there and gets the points. Because today it's very, very important. As I said, he is going to be against Lokesh Gosalia, and that right cover. That is what I wanted to ask with Puran, where he is looking very confident. Manjeet's back is good. Manjeet, of course, will be in the left cover position, and he will be waiting against Sundar Vishwakarnan. But do not forget, Marimuthu Selvam is always there to support Sundar Vishwakarnan. And also, you might even see Vasant. You might even see Vasant coming back. He is almost getting better with his fever, so he's almost ready. He might also come back when it's needed.
जी हाँ, निश्चित तौर पर तो एक बहुत अच्छा रेडिंग का कॉम्बिनेशन, जैसा पूरन साहब ने कहा कि उनके पास सब्स्टिट्यूट्स में बहुत अच्छे खिलाड़ी, तो नीलगिरी काई के पास भी वहां पर लगातार बहुत अच्छे खिलाड़ियों की खदान नजर आती है। बट खदान की अगर मैं बात करूं तो जिन्होंने डिफेंस में अपनी टीम के साथ एकत्रित होकर बहुत सारे टैकल पॉइंट प्राप्त किए और जो जज्बेदार खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं मनी के अंदर निशा मनी है। 7 टैकल पॉइंट से, पर उनकी टैकल सक्सेस रेट सच में इंप्रोवाइज हो रही है लगातार 42%, जो एक बहुत ही अच्छा क्रम है नवीन। Yeah, totally. Again, very quickly, if we see what he's done, look at that right cover. He goes out there and makes sure he goes in the chain. This was Durgesh's classic example. When the cover defenders stand in the chain instead of a raider, then that is a very big innovation Nilgiri Knights have brought in. I should really appreciate them for that, because it is not there in their regular style of play. Because every time in any district of Tamil Nadu, you will not find cover defender standing in the chain, Arshit. It's always going to be the raider and the cover defender standing, and they'll leave out one raider away. Yeah. That has been their technique. And today, if Nilgiri Knights have seen it and learnt it and innovated it and implemented it in their way of strategy, that's a hats off for them. So again, he's going to be against Gopal Singh, and if not, even Richpal Jat might come in. Well, we'll see how the dashes happen as well. जी हाँ नवीन, और अब एक ऐसे शख्स को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। ही इज ऑन फ्लीक, प्रॉपर एम्बिशन के साथ आते हैं, प्रॉपर अपनी पूरी एक्सपीरियंस के साथ वहां पर प्रदर्शन करते हैं। और मुझे लगता है नवीन, आपने किसी और से ज्यादा बात की ना की हो, पिछले 2-3 दिन में इनसे सबसे ज्यादा बात की होगी आपने। क्योंकि हर बार है वहां पे, हर बार उनसे बात कर रही हैं। आइए राजाराम, तो द कोच ऑफ नीलगिरी नाइट्स इज हियर. ஃபர்ஸ்ட் காலையில ஜெயிச்ச பிறகு போயிட்டு நல்ல ஒரு தூக்கத்தை போட்டீங்களா இல்லையா? What I'm asking is, did you guys go back and take better rest? Did you have a small little nap that is very much needed? சேமா சார், எல்லாம் நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துருக்காங்க. அதே சமயத்தில் நெக்ஸ்ட் மேட்சும் பிளான் பண்ணி ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்காங்க. அருமை. அப்புறம் வேற ரேடர்ஸ் பத்தி நான் புரன்ட்ட கேட்டேன், உங்க எதிராளி கோச் இன்னைக்கு. ஸோ நீங்க வந்து அந்த லெஃப்ட் ரேடர் ரோஹித் யாதவ் அவரை தடுத்து நிறுத்தியே ஆகணும். ஸோ சந்தோஷ் ஸ்ரீனிவாசன் எவ்வளோ தயாரா இருக்காரு ரைட் கார்னர்ல? ஏன்னா நாங்க என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, சந்தோஷை வந்து ஒரு ரேடர் ரன்னிங் ஹேண்ட் டச் அடிக்கிற நேரத்தில் தான் அவர் பின்னாடி போற நேரத்தில் அவர் டச் வாங்குறாரு. ஸோ இல்லைன்னா அவரு போய் அட்டாக் பண்ற நேரத்தில் அருமையா வந்து விழுந்து பிடிக்கிறாரு. அடி இல்லையா உனக்கு வருதா? பேக் வந்து மேலே ஏறிடு. ஆனால் லைனில் பக் லைன் கீழே வச்சு அடிக்காதே, காரணம் ஒன்று அடிக்காது. மேலே வந்து அடிச்சுக்கணும். நீ கோல்டு தை கோல்டு பண்ணுறது மேலே வந்து அடிச்சு. அதே சமயத்தில் கவரை தொட்டா மட்டும் நீ போகிறோம். எலிமினேட்டர் நம்பர் 4. இப்போ இந்த ஒரு கடைசி கட்டத்தில் செமிஃபைனல்ஸில் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. ஸோ இன்னைக்கு ரேடர்ஸ் காலையில் விளையாடின ரேடர்ஸ் தானா அந்த தெம்போட தான் இருக்காங்களா? நம்ம வந்து சுந்தர விஸ்வகண்ணனை பார்ப்போம், அப்புறம் இந்த பக்கம் மாரியை பார்ப்போம். 3வது ரேடரா யார் வராரு உள்ள? ஹரிஷ் வராரு. ஸோ வசந்த் கூட தயாரா இருக்காரா? எப்படி இப்போ தேவைப்பட்டா உள்ள வரதுக்கு தயாரா இருக்காரா? இன்னும் ப்ரிப்பேராக இருக்காரு சார். தேவைப்பட்டா ஏன்னா இன்னைக்கு பிளான் வந்து 2 லெஃப்ட் ரைடு ஒரு ரைட் ரைடு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அவர் தேவைப்பட்டா கண்டிப்பாக உள்ள. வாழ்த்துக்கள், நலமுண்டாகட்டும். நீங்க ஜெயிச்சா நாளைக்கு ஃபைனல்ஸ் சந்திப்போம். நன்றி நன்றி. So yeah, they're all set, they're all ready. I think we should also be ready now to run into the commentary box. जी हाँ, तो चलिए दोनों ही टीमें तैयार हैं और एम्फसाइज करेंगे कहीं ना कहीं अपने टेनिशियस टैकल पॉइंट्स पर उतने ही इंपॉर्टेंट होगी आज के रेड पॉइंट्स, क्योंकि नवीन कह चुके हैं हम दोनों ऑलरेडी वहां पर तैयार हैं पूरी तरह से। बहुत ही कुछ बेहतरीन कार्य के साथ ही एलिमिनेटर नंबर 4 बहुत ही ज्यादा लाजवाब होने वाला है। कौन करता है किसके किले को ध्वस्त, आइए इस मुकाबले के दौरान जानेंगे। हम युवा कबड्डी सीरीज परिवार शपथ लेते हैं सुरक्षित खेल और सत्यनिष्ठा की। We at Yuva kabaddi series take a pledge to play safe and clean sport. Thank you so much everybody for making this Yuva Kabaddi series on the summer edition safe and clean as well, as we are going into the eliminator number 4. Is it going to be Periyar Panthers against the Palani Tuskers tomorrow, or is it going to be the Nilgiri Knights against the Palani Tuskers tomorrow? This 40 minutes will answer us. As Harshit, can we have both the teams on the mat please? बामुलाइजा होशियार तशरीफ ला रहे हैं चंबल चैलेंजर्स के किले को ध्वस्त करके राजस्थानी रजवाड़े। आइए तालियों के अभिवादन के साथ करते हैं उनका सुस्वागत हम। तो जोरदार हो जाए हुक्का, पेरियर पैंथर्स।
Their coach Puran Shekhawat told that yesterday also they were sitting out there and strategizing. They did not go out to get some fresh air. So they are totally focused as they want to conquer this eliminator and go to the finals. अब इस कबड्डी के मैट पर तशरीफ लाएंगे the proper mixture of offense and defense. नीलगिरी से सशक्तिकरण पहचाने आ रहे हैं नीलगिरी नाइट्स. Wonderful to see the Nilgiri Knights actually run in here by eliminating 3 teams. Not easy when you finish at the bottom of the challenger round and then go out there and all the matches play it as a knockout match, and that is what they have done. They have eliminated the Chola Virans, they have eliminated the Arab Liaros, and today in the morning they eliminated the Chambal Challengers. So Nilgiri Knights for the very first time in this summer edition, they are making their debut and they are also playing the second match of the day for them the very first time. So they are all pumped up. Rajaram, as always, has very, very clear plans against this starting 7 as Lokesh Gosalia and Anuj Saini will be in the corners, trusted corners as Gopal Singh and also Rohit Yadav. And then in the middle we have Monu Prasad, right? So Gopal Singh and Rohit Yadav, only 2 Raider format from Puran Shekhawat. That's a nice intro as Manjeet Mitra and Rahul Chaudhary will be in the covers. I think Manjeet Mitra will be used as a raider as well when needed. Kanaram Chaudhary can come in, Nakul Saini can come in and raid, Richpal Jat can come in and raid, Sardar Chaudhary can come in and raid, and Mukesh Chaudhary is that lone defender in the substitution lines. Harshit, all the raiders have been rested. 2 raider format strategy. I think everybody is following the footsteps of the Palani Tuskers. जी हाँ, पिछले मैच में ही करके दिखलाया था पेरियार पैंथर्स ने बहुत अच्छी तरह से, बट क्या वो काउंटर अटैक के साथ ये नीलगिरी नाइट्स तैयार रहेगी? क्योंकि कहते हैं ना कि सितारों के आगे उस जहां में कुछ फरिश्ते रहते हैं और ये टीम उन फरिश्तों की तरह उभर कर आई है अपनी टीम के लिए और एलिमिनेटर्स में लगातार अच्छा किया है. एस्पेरिमोतो सेल्वम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वहां पर पिछले मैच में करके दिखलाया. दोनों मणिकंदन दोनों कवर्स को संभाल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है. सुंदर विश्वकन्नन जब से आए हैं टीम में अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करने का पूरा डंका इन्होंने बजवाया कि हरीश वहां पर होंगे. द परफेक्ट रीडिंग ट्रायो यहां पर नजर आने वाला है और एस संतोष श्रीनिवासन नवीन मुझे वन ऑफ द बेस्ट और बहुत ही वैल्यूएबल डिफेंडर नजर आते हैं जब मैं राइट कॉर्नर पर बात करता हूं. लेफ्ट कॉर्नर पर विलिवन वहां पर होंगे, एस अभी कुमार, वसंत, जॉर्ज विविन, एलू मलई और अरविंद राज. तो वसंत मुर्गन हमें नजर आ रहे हैं नवीन. Yeah, totally. As Vasant is always there to go out there and support whenever is needed in the substitution lines. But it's so very interesting to actually go out there and mention what we will want to see for the very first time. Gagan Gowda has been pushed down from the top slot as Durgesh Kumar becomes the top raider of the summer edition. 274 raid points, and I think somewhere around 28 tackle points. If I'm not wrong, he would have got that as well as the most valuable player of this series as Sanskar Naveen Mishra. It's a disappointing end for Sanskar as Chambal Challengers have been eliminated today in the morning. जी हाँ नवीन, अगर आपने टॉप 3 रीडर्स की बात की, अब टॉप 3 डिफेंडर्स की हम बात करते हैं. इनके बारे में हमने बहुत सारी वार्तालाप की ना. लोकेश गोसलिया 29 मुकाबले खेले, 93 टैकल पॉइंट्स है और बहुत ही कंसिस्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस के साथ और बहुत ही अच्छे कप्तान के तौर पर है. अंकित जॉर्ड में यहाँ पर हमारा साथ जा चुके हैं राजेंद्र बाकर ने काफी समय पहले. नवीन, अगर आप देखिए 3rd प्लेस पे जो डिफेंडर है और पहले पायदान पर जो डिफेंडर है उनके बीच में अंतर 33 पॉइंट्स का है और 33 रेड पॉइंट्स हमें समझ आता है, 33 टैकल पॉइंट्स नवीन. Exactly, and no other defender has come in and taken Rajendra Bakar's place. It's been very long time since Rajendra Bakar left the summer edition as Raki Urf Bobby actually flips the coin over, and the Periyar Panthers won the toss. So the first raid will happen from the Nilgiri Knights as Marimuthu might be starting it out, but look out for this. Lokesh Gosalia, just 7 more tackle points, and he will be the first man in the Yuva Kabaddi series edition here to go out there and get the 100 tackle points. But Rohit Yadav behind him, 145 raid points. That's a wonderful number to have. And Puran Shekhawat told how he molded Rohit into becoming a premium raider, as a team needed one raider like this who can shoulder all those responsibilities. And with our young shoulders, yeah, Rohit has come out with flying colors.
जी, और जिस प्रकार से रोहित वहां पर आपको नजर आ रहे थे, यहीं अगर आप नीलगिरी नाइट्स के लिए बात करें, मल्टीपल नेम्स आपको नजर आएंगे, बट आज जिस खिलाड़ी पर शायद सबसे ज्यादा दावेदारी हमारे प्रोड्यूसर मान रहे हैं वो होंगे के हरीश। 19 मुकाबलों में 71 रेट पॉइंट्स है, रेट स्ट्राइक रेट 49 के आसपास है। और ये खिलाड़ी अगर आज प्रॉपर फिटनेस, क्योंकि पिछले मैच में इनकी प्रॉपर फिजिकल फिटनेस हमें नजर आई थी, आज भी अगर वैसा चला तो ये आउट ऑफ द बॉक्स एक सरप्राइज पैकेज लेकर आ सकते, क्योंकि के हरीश नहीं, ये रॉकेट हरीश है नवीन। Totally, no doubt at all. Even with that little injury on that right knee, he's done well. All these numbers won't matter at all today, as this is the D-Day. This is the penultimate of the D-Day also, because this is the semi-finals. The winner of this will go through to the finals tomorrow and play the Palani Tuskers, as already Palani Tuskers have made it twice to the finals in the Puducherry leg and here as well. Can Lokesh Gosalia achieve 100 tackle points with 2 matches remaining? Okay, Ankita Rajput, hang on, it is 1 match, not 2 match, by the way. If they win today, it is 2 matches. But I am expecting Lokesh Gosalia to get a high five today. I mean, 7 tackle points for him is not a problem at all. I am expecting that he will get a 100 tackle points mark today itself. या मजा आ जाएगा। नीलगिरी नाइट्स जरूर ये नहीं चाहेगा, बट हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर जो बेहतरीन खेल खेले वो निश्चित तौर पर इस मुकाबले को जीते। और अगर आप बात कहते हैं नीलगिरी नाइट्स की, नवीन इससे पहले लगातार हारे आ रही थी, पर जो पिछली 3 जीत आई है उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर गया है इस टीम का। और वो 3 जीत के साथ साथ नवीन जो प्रश्न आर्यन कुमार ने यहाँ पर पूछा है उसकी तरफ चलते हैं। कैन नीलगिरी नाइट्स बी द फर्स्ट टीम टू प्ले द फाइनल्स, finishing 5th at the challenger round points table? वैसे पेरियार पैंथर्स भी थी पिछले समर एडिशन में। Actually, and we have also seen, Dwarka defenders also come out there and play the finals in the Pune leg as well. Yeah, we will speak about that question more in depth as we go to the countdown and get this eliminator number 4 started. So the Periyar Panthers had won the toss and the first trade will happen from Mari Muthuselvam. Akshay Desai gives the go-ahead and no, K. Harish wants to start. It's not Mari. The captain sends his lieutenant and the left raider first up. Right, so just going back to that question, I'll tell you, it might not be the first team to finish 5th to go out there, but it might definitely be the first team in their inaugural season to be finishing out in the last position of the challenger round and reaching the finals, but that was a nail biting of the tackle. Puran had his heart in the mouth. और नवीन, मुझे अभी से ही नेक टू नेक थ्रिलर और फाइनल वर्दी एनकाउंटर की यहाँ पर क्रम की आदत आ गई है। और देखिए जिस तरह से सिंगल थाई पर गए, एक बहुत ही अच्छा टैकल, और इसलिए शायद मनजीत मित्र का इंक्लूजन बहुत जरूरी था नवीन पेरियार पैंथर्स के लिए। Yeah, we spoke about that left raider and that left cover combination tackling out very nicely, isn't it, in the pre-show? That is what it is all about. As now Rohit Yadav steps in. First point for the Periyar Panthers, and Velavan does well. Yeah, he actually apologized in the camera in the show yesterday as well, saying he will not be over-aggressive. He apologized to everybody, and I hope he will keep his aggression down. Empty rate to start off for Rohit Yadav. एक अच्छी शुरुआत। और नवीन, मैंने और राधिका ने बहुत ज्यादा चर्चा की इस खिलाड़ी पर। एक चीज हम दोनों ने ऑब्जर्व की कि हर डिफेंडर को प्रॉपर चेक करते हैं खिलाड़ी, और वही एसमरी मुथुसेल्वम यहाँ पर कहते हुए एज ए राइट रीडर हैं लोकेश गोसलिया। कल दुर्गेश के विरुद्ध इनकी प्लानिंग बहुत ही सशक्त थी और बहुत ही क्लियर प्लानिंग के साथ आए थे। आज देखते हैं एसमरी मुथु के विरुद्ध कैसी प्लानिंग होने वाली है। मनजीत मित्र को शायद आज पूरी तरह से आप अग्रेसिव खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। See, if he wants to go out and attack like that, let him stand in the right cover. When Mari Muthuselvam comes in, let him shift his positions and go to right cover instead of Rahul Chaudhary being on the right cover. You can't attack from the left cover. As a right raider, you just can't have a proper tackle on the right raider being in that left cover position. So watch out, Manjit. I know aggression is good and it has to be under a little borderlines. No! That's not right. Manigandan Nesamani gives away an easy point to Gopal Singh, and Gopal was not even going for the point.
गोपाल सिंह, इनकी जो टर्न्स हैं नवीन, और मैं अभी नहीं, शायद मुझे पहले से याद है कि एक दो एडिशन पहले मुझे ये खिलाड़ी बहुत ही इंप्रेसिव नजर आया था, और एक और इनकी इंप्रेसिव स्टोरी और इंस्पिरेशनल स्टोरी कह लीजिए वो बहुत ही अद्भुत है। बट सुंदर विश्व On the board in this eliminator number 4. Wonderful anti-blocking skills, and that's what Manjeet and Rahul. So if you are over-aggressive, that becomes a problem. Harshit, the secret is of Sundar Vishwakannan, in under those blue shoes that he's wearing, in his left leg, you'll not believe, he's only got 1.5 fingers. In the toes, he's only got a half thumb finger, and I think a little more than half of a little finger. That's all. Overall, it's just one and a quarter fingers that he's got. That is it. And he's coming to raid once again. But the reason I say that is because as a raider, Harshit, and as a left raider, his left leg is so important for all the bonus points and all those ankle holds and everything. Just imagine how much of a dedication he could have put in his kabaddi game to go out there and become such a wonderful raider. And he's been dashed out now. That's a very, very good dash. He was turning blind, and Monu Prasad being the third or fourth defender is done well. जी हाँ, मोनू प्रसाद जिनकी एक्चुअल पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर है, बट जैसे जैसे इस खिलाड़ी को मौका मिल रहा है ये हर पोजीशन से अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा करें, और बहुत अच्छा फ्रेम चूज किया नवीन। जैसे ही इन्हें मौका मिला था वो डैश करने के लिए बिल्कुल मिडरिफ पर गए, और क्या बात की नवीन आपने। आज मैंने पेनल्टी मेट डे की शुरुआत की थी तो कहा था कि जो पसीने की स्याही से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, और इस सुंदर विश्वकन्नन इतिहास बदल रहा है। ऑलरेडी अपनी हाइट अचीव कर रहे हैं, ऑलरेडी वहां पर आर्मी में है, आर्टिलरी मैन आप उन्हें लगातार कहते हैं, और फिर भी इनके पास बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता है, और ये हमेशा नवीन धन्यवाद सबको करते हैं। ये इनकी सबसे अच्छी स्किल है। यहाँ रोहित यादव चेकिंग ऑल द डिफेंडर, मुझे लगा शायद मिड लाइन को क्रॉस किया। Oh, there Ashita and her gang has come out. Oh, Santosh Srinivasan. And Velavan is not happy with something. The right corner goes out with a proper block. But then Santosh Srinivasan, Velavan tries it first. Anti-cross first, and then the raider is crossing out. So somewhere Nilgiri Knights could have gone for the review. They could have challenged that 2 pointers that was being given away. You know, it's one review per half. So they could have easily challenged that review. They did not go for it. Yeah, because see, he's in the artillery's section already and playing kabaddi. He's been selected with that sort of a little drawback, which he's not shown it as a drawback. And he's been playing there for like 3 years now, and it's very, very soon he's having a big hope and big dream of getting selected for the services team as well. So whether you have all the fingers or no fingers, how you play a kabaddi match is what matters. That's what Sundar Vishwakannan has actually shown to the world. और नवीन बहुत दिनों पहले जब मेरी इनके साथ वार्तालाप हो रही थी, इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी की थी जो शायद मुझे दिल पर बहुत अच्छी तरह से लगी थी। इन्होंने कहा था कि मैंने मेरे पिताजी से ये सीखा है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में कैसे गुजारा जा सकता है और कैसे उसमें भी आप बहुत खुश हो सकते हैं। तो ये सब्सटेंशियल हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट लाइफ में नवीन एक फंडा होता है ना कि कैसे आप खुश रह सकते हैं, और एक खुश रहना जानता है खिलाड़ी, मॉरल बूस्ट करना जानता है। पर इस बार के हरीश होंगे 6-2 से शुरुआत में पेरियार पैंथर्स ने बढ़त बनाई है नवीन। के हरीश का आज रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोनू प्रसाद की पोजीशन को लुकआउट कीजिएगा। Oh God, he's got 2 points. Lokesh Gosalia. I said his ankle holds are just unbreakable. But I think the only problem was he was too advanced. He was outside the balk line. Yeah, there you go. The defender's borderline is the balk line. You can't tackle anybody. And look at Harish's brilliance of kabaddi thinking. He kicks Rahul Chaudhary BN before reaching the midline as well. So, Ashit, the start of the Nilgiri Knights' Raiders are good. The defense just needs to settle down. They're, I think, getting over anxious in going out there for all the touch points. Yeah, that's good. The two defenders, Suramani and Nesamani, in the chain is good. They're okay to give the bonus away. And look at Velavan. Look at Velavan. Velavan is coming as a right corner. And then Harish goes for the pursuit. What was Harish doing there on the left corner? Right, that was interesting. जी हाँ, वहां पर क्योंकि वेलेवन बाहर चले गए हैं और संतोष श्रीनिवासन वहां पर थे। देखते हैं एक बार फिर से कि क्या उनका रिवाइवल हो चुका था। यहाँ मंजीत ने एक बार गलती की थी, बट रोहित यादव ने इस बार टैकल में साथ दिया है। एक बार लग रहा था कि के हरीश को रूट मिल चुका है, वो एस्केप रूट जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं। ओ, ये अच्छे दृश्य नहीं है नवीन, हल्का सा शायद नी में निकल आया है के हरीश के। He's got that ligament problem in that left knee. Yeah, Monu Prasad gets it, but then goes out there on the third line of defense. And Rohit Yadav, he says, enough, guys, leave me.
but on the moment could not be out there. That's not a nice sign. That's not a really good sign for K. Harish. So Vasant will have to be getting ready very soon. As now Gopal Singh is coming for a do-or-die raid. Where can he go out there and have a touch? No, he says, I've not got Sudalamani. And there's somebody comes across. Wonderful cover. And that combination of Sundar Vishwakannan for the dash as see Vasant Murugan. He's coming in. Vasant Murugan has opened his jacket out. He's got a little more fever as well, but that's okay today. जी हाँ, के हरीश को अगर वहां पर इंजरी हुई है तो के वहां पर आना बेहद जरूरी है इस खिलाड़ी का। बड़ा अच्छा टैकल इनिशिएट किया और दोनों कवर्स एक साथ गए नवीन। और जब उन दोनों का ब्रूचुअल फोर्स, ये मुझे हल्का की तरह लगते हैं नवीन। ये दोनों ही जो ही मैन करके पहले जरूर एक कार्टून कैरेक्टर और एक बहुत ही बेहतरीन जिन्हें बहुत एडमायर करते थे, उनकी तरह इनके शोल्डर्स बहुत ही तेज हैं, बहुत ही पावरफुल हैं और दोनों ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं एज अ कवर। एस मरिमुथुसेल्वम इस बार लोकेश गुसलिया पर किक के ट्राई करते हुए, पिछली बार बहुत अच्छी जंप लगाई थी। नीलगिरी नाइट्स डिफेंस और ऑफेंस दोनों का एक बहुत अच्छा मिक्सचर के साथ मैट पर उतरता है। Yeah, Nilgiri Knights needs to understand that whatever the errors that has happened is not the raiders attacking you, it's the defense going and having those advanced tackles. That has been the problem. Now Rohit will not cross the balk line in. He will just play on the balk line raiding front. That's all. See, he's not been drawn inside. And that's a very good strategy there by the defense. They've drawn him inside, they let him go with an empty raid. And now the man. Right, this is what there's so much of a storyline that we were discussing about. And I asked him, you know, Arshit, today when during the lunch break, I asked him, Sundara, is it okay that if we go out there and discuss this as, you know, your artillery team or anybody, will they, you know, find out this thing and they find you? They say, no, everybody knows it. That's fine. Even in the artillery in my unit, everybody knows I have that a little, you know, fingers missing in my left leg. That's okay. Nobody's bothered as I'm playing well. Anuj Saini comes in. No, I should have tried in this raid because this is going to be the second empty raid for the Periyar Panthers. जी हाँ, यहाँ पर अनुज सैनी पहले आराम से खड़े हुए वहां पर थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे कोच का कॉन्फिडेंस इन्होंने जीता है नवीन, पर जरूर ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहेंगे। और यहाँ क्योंकि डू और डाई रेड है मरिमुथुसेल्वम के लिए 5 का हाउस है, बोनस जरूर ऑफ होगा। अनुज सैनी लोकेश गुसलिया का परफेक्ट कॉर्नर कॉम्बिनेशन वहां पर आपको नजर आ सकता है। देखते हैं किसकी तरफ जाएंगे। किक लगाई थी पर मैं लोकेश की तारीफ करूंगा, अच्छा बचाया नवीन उन्होंने अपने आप को। Yeah, totally, but that time. Oh no, Lokesh Gosalia. Puran Shekhawat also knows it. If Lokesh Gosalia is having a two-minded affair, this is what happens. First, he does well to go back and then his left knee. Oh, why didn't he go pounce on Marimuthuselvam's ankles? This is testing times now for Rohit Yadav. It's a do-or-die raid, Arshit. I don't see. Oh, look at this. The defense changes, corrections the angle. No, that's not right. The defenders, both of them should have been in the chain as Vasant Murugan changed it. And then the toe touch. How many times have we said that? If Vasant Murugan was left alone, it would have been nice. Can we have the replay? No, not here. Can we have the replay of Vasant changing the position and standing there? I think EVS Ram will give that to us very soon. नवीन, जिसके बारे में हम पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। जैसे वो थोड़ी सी डू और डाई रेड देखी, एक मणिकंदन जो कि वहां पर मौजूद थे, वो थोड़ा सा वहां पर बाहर गए। वसंत मुरुगन वहां पर आए और तुरंत रोहित ने वहां पर देखा और टो टच वहां पर किया। आप सुंदर विश्वकर्णन वहां पर होंगे। 5 का हाउस है। क्या एक शानदार टच वहां पर किया है था मंजीत पर, एक बहुत ही अच्छा कार्य है। मंजीत इस बार गए थे दोनों थाईज के लिए अच्छे डैश करने के लिए, बट सुंदर विश्वकर्णन ने अपनी लॉबी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और प्रॉपर एक्सीलरेट किया मिड लाइन को पार करने के लिए। Yeah, Sundar Vishwakarnan has been good. Oh, don't tell me Manjit Mitra, he's injured himself. He's feeling a little not so good. Oh, he's gone and banged in. Sundar Vishwakarnan's rib cages. He's already having a little bit of a concussion. Right, Rohit Yadav, so brilliant in his previous raid. Now Vasant Murugan, of course, is standing in a proper raider's position in that left-hand position. He wants to go for the diving touch on the covers. If nothing happens here, we will go back to see in the previous raid of that do-or-die raid for Rohit Yadav. And just before the toe touch happened, Vasant Murugan changed his position and went to the hands. Now look at this. Look at that. No, Nesamani. I did not like what you did. And immediately after that, look Rohit what he did. He just did not even try anything. And he just goes boom on the toe touch.
जी हाँ, यही फर्क पड़ता है। और मैं तारीफ करूंगा इसमें रोहित यादव की भी की, जिस तरह से उन्होंने तुरंत देखा, एक्सिलरेट किया, क्या लॉबी में चले गए थे। जरूर अक्षय देसाई वहां पर बना करते हुए, और महाराष्ट्र के अक्षय देसाई वहां पर रेफरी मौजूद है। और रेफरीज की भी हम बात करते हैं नवीन, तो वहां पर पूरे भारत से यहाँ पर आपको रेफरीज नजर आते हैं, हर एक स्टेट वहां पर कवर करने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ पर वही दोनों आपको नजर आ रहे हैं, सुंदर विश्वकर्णन मिडल में है, दोनों मणिकंदन की वहां पर क्रम रहने वाला है, और अनुज सैनी सिर्फ डिफेंस को टेस्ट करते हुए शायद वापस चले जाएंगे। If Sundar Vishwakarnan would have stood on that cover position, holding Nesamani's hands, it would have been wrong. Oh my God, that was such a good move, I should say. Sundar Vishwakarnan, your job is to raid. You keep on raiding. Forget Nesamani and Sundar Mani. Leave them alone. Running attack on Monu Prasad. He is just an unstoppable artillery weapon that's coming towards you when he charges like that. जी हाँ, अपने अस्त्रों का प्रॉपर सही समय पर उपयोग करना ये किसी भी आर्मी के व्यक्तित्व के लिए बेहद जरूरी होता है। और इनका सबसे बड़ा वेपन, इनका अस्त्र, इनके हैंड टचेस हैं, और बहुत ही बढ़िया बड़ी आसानी के साथ नवीन हमने जयसूर्य नागराजन को देखा है, हमने सुंदर विश्वकर्णन को देखा है कि बहुत ही इजीली हैंड टच करते हैं 4 या 5 के हाउस में भी। बट यहाँ रोहित यादव की एक बार फिर से महत्वाकांक्षाओं की परीक्षा होने वाली है। पेरियार पैंथर्स को क्या एक रिवाइवल दिला पाएंगे? डू और डायरेक्ट है, शायद संतोष श्रीनिवासन ने बोनस देने का मौका दिया है, रोहित यादव फिर से शायद ट्राई ऑन करेंगे। I think that will be the strategy. Give him the bonus and don't give him the touch point, because they are losing men out there. And when Rohit goes back, it's going to be a super tackle situation. That is what the idea is all about. Raider out. Raider out, no bonus point. Oh, Rohit Yadav, the bonus was given to you. Can the Periyar Panthers challenge this? Yes, they should. It's one review per half. They really should go out there and challenge it. Bonus was not given. And Raki Please come. will just confirm us the same thing. Please go back. TV umpire, Periyar Panthers challenge is bonus point. Our decision, no bonus point. Please review. Ashit, he had, I think, 3 or 4 attempts. Yeah. Did you find anything convincing? Not this. Definitely not this attempt for sure. I think he's just cutting the bonus line on the outer half. He looked very confident with that. He looked very confident with that. जी हाँ नवीन, वहां पर अच्छे कॉन्फिडेंट नजर आए थे। अपनी टीम से उसके पश्चात पूछा था, अनुज सैनी ने कहा कि जाइए रिव्यू की मांग कीजिए, क्योंकि वहां पर 1 अनसक्सेसफुल रिव्यू पर हाफ वहां पर होता है। और राखी कुमारी की वहां पर आवाज में हमें सुनाई दिया टीवी रेफरी तक, उनका निर्णय अभी भी आना शेष है। बट नवीन, नेक टू नेक मैच की शुरुआत है, 8-8 बराबरी पर स्कोर है। और किसी ने शायद प्रेडिक्ट भी किया था नवीन की 12-13-15 इसी के आसपास पहले हाफ की शुरुआत में हम ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं। Totally, so no doubt at all, because the first half is going to be a little tighter, and then the real fight will happen in the next 20 minutes. But yes, until Rambir Singh has the time to see in all the angles, I think we will also go out there and speak about the referees, as we always do. You know, they are also having a nice day out where, you know, they visited the KRS dam, where of course Sagar Panchal's shirt got tore, and he immediately on the second day he immediately wore a new shirt. How many new shirts he's got from Mumbai? लेकिन नवीन, पिछले 4 एडिशन से मैं उन्हें देख रहा हूँ, और उनकी वाइफ जब बीच में आई थी उन्होंने एक बात मुझे बताई थी, वह पहले इस बोनस को एक बार चेक करते हैं फिर से कि क्या ये बोनस किस अंदाज में वहां पर रहेगा। निर्णय आना अभी भी शेष बचा है नवीन, बट हर बार वो नए एडिशन में आने से पहले सागर पंचाल 10 नए शर्ट्स खरीदते हैं, और वो उनकी वाइफ सिलेक्ट करती है कि कौन कौन से शर्ट वो लेकर जाने वाले हैं। For every series, Yeah. 10 shirts. Yeah. Review unsuccessful, no bonus. Raider out, 1 point. Review unsuccessful. Captain, no more. Right, this is not what the Periyar Panthers expected. Unbelievable. And no bonus is what has been decided by Rambir Singh, so that is what it stays like. Rohit, now it's a big learning for him. You know, Yeah. do or die rate. Don't have to be too confident on a bonus point. And Lokesh Gosalia has been out for a very, very long time. And this is the first time it's going to be a one-man standing show again. It's going to be Anuj Saini. Oh, error from Rahul Chaudhary. One But point, don't Nilgiri bother. right. Just Anuj number Saini 6 is here to go out there and get some touch points. जी अनुज सैनी वहां पर इकलौते खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे जो खड़े होंगे, बट एक खराब एरर वहां पर देखिए, राहुल चौधरी बीएन दोनों एंकल्स पर शुरुआत में जाने का प्रयास किया। हालांकि सुपर टैकल्स में पेरियार पैंथर्स के मैक्सिमम नंबर्स आपको नजर आएंगे, बट यहां पर उनसे एक चूक हुई। राहुल चौधरी और लोकेश गुस्सेला के बाहर जाने का ये फर्क होता है नवीन। लोकेश जब बाहर बात जाते हैं हमेशा उनकी टीम थोड़ा सा परेशानी का सबब प्राप्त करती है। यहां अनुज सैनी नवीन देखते कि क्या कवर पर टच कर पाएंगे, अच्छा प्रयास था जरूर, लेफ्ट टू राइट तेजी के साथ भागेंगे, डिफेंस को अनसेटल करने का प्रयास करेंगे। विल क्या एक एंकल होल्ड के लिए जा सकते हैं?
I think the defense will stand back. It'll just be faking the bonuses. And as the dash come in, hang on, Mohan Gowda and Akshay Desai will have a discussion. Now, first of all, before the dash, Harshit, I want to know if there was a touch point. Why did the dash come in? I did not understand why the dash had to come in. And once again, Anuj Saini is trying to create the magic what he created against the Hampi Heroes. Sagar Panchal immediately comes in. And Manigandan Sudalamani actually looks very, very confident, saying, yes, I have gotten the dash from that left cover. Yeah, I think there was a toe touch on Harish first, and then the dash came in. So maybe that is why, you know, somehow Sudalamani went in for the dash. जी और ये मुकाबला बिल्कुल जिस प्रकार से नेल बाइट कर रही है यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची, वैसे ही मुकाबला होने वाला है। और पीछे आप अरविंद को पर्पल जर्सी में बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हुए नजर आ रहे हैं धन्या को। और अरविंद जी का एक और नया मैं आपको टैलेंट बताता हूँ नवीन, कि ही इज ऑल्सो नेशनल स्विमर। आज हम जब एक साथ स्विमिंग करने गए थे, उन्होंने संग्राम के साथ रेस लगाई। शुरुआत में संग्राम ने लीड प्राप्त की, बट उसके पश्चात उन्होंने जीता था सभी का दिल। जैसे ही अनुज आज एक बार फिर से दिल जीतते हुए आए हैं, और मुझे नहीं लगेगा कि नीलगिरी नाइट्स रिव्यू नहीं जाने देगा, बिल्कुल लेकर जाएगा रिव्यू। Yeah, totally. They will want to check this. What is your challenge? Raider out. Mari says the Raider is out. TV umpire. Nilgiri Knights challenge is Raider out. Our decision, Raider save 2 points. Please review. Slow down, Rocky, slow down. The train is still not come to the Mysuru platform. How quickly she said that. She's more quicker than any commentator, but yeah. Now, first of all, is there a hand touch here? That is what they will see. If there is a hand touch, then Anuj Saini going to the lobby makes sense. Anuj not a very tall raider. I think there is a gap between Sundar Vishwakannan and Anuj Saini's hands, and he's first gone into the lobby. First of all, and even the dash is completely outside the lobby and reaching it. So first of all, I will want to see if there was a hand touch on Sundar Vishwakannan. That is the big factor. Now we'll have to completely hear it. If, you know, Raki says review, successful, unsuccessful, whatever, is it Raider out or is it Raider out of bound? Yeah, we want to clearly hear that. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा नवीन, क्योंकि वहां पर पहले एक टच था सुंदर विश्वकन्नन पर, या था या नहीं था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट 10-8 का स्कोर और इकलौते खिलाड़ी बचे अनुज सैनी पेरियार पैंथर्स के लिए, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पर रिव्यू लिया गया है नीलगिरी नाइट्स की तरफ से। देखते हैं किसके पक्ष में हो जाएगा। राखी कुमारी और हमारे तमाम लाखों करोड़ों दर्शक फैन कोर्ट पर शायद इसका इंतजार कर रहे हैं। बट पेरियार पैंथर्स ने नीलगिरी नाइट्स से बहुत अच्छी वापसी की। एक बार लग रहा था 6-2 का शायद स्कोर था, उसके बाद सिर्फ 2 पॉइंट पेरियार पैंथर्स को दिए, और नीलगिरी नाइट्स ने 8 पॉइंट लगातार और निरंतरता के साथ प्राप्त किए हैं। Raider save 2 points. Periyar Panthers. Raider save 2 points. Right. That is what the decision is. So that means there was a hand touch on Sundar Vishwakannan. So that is what it looks like. Yeah, there was a jersey touch maybe. And the dash, I think, was been through the lobby, whatever. So that is what the discussion is. Right, so going ahead on a super tackle situation. Lokesh Gosalia has come in. And the moment he's coming from the bench, he's gone in for a quick super tackle on the ankle hold on Mari. 2 points. या नवीन, आई लाइक द मोस्ट कि जिस प्रकार से लोकेश ने टैकल किया, उसके बाद अनुज सैनी ने उनके पैट किया, यानी कि पीठ थपथपाई, वो उससे कॉन्फिडेंस बताता है। जरूर अनुज सैनी वहां पर मौजूद थे, गोपाल सिंह मौजूद थे, लोकेश गोसलिया जैसे किक के लिए गए, एसमरी मुत्तु सेल्वम पूरी तरह से टाइम लगा दी। लोकेश गोसलिया का प्रेजेंस फील होना बेहद जरूरी है इस बड़े एलिमिनेटर में। 12-10 नवीन, अगर यहां से पेरियार पैंथर्स पूरी तरह से अंत में जाकर मुकाबला जीता, तो मेरे लिए कबड्डी कमाल मोमेंट कहीं ना कहीं अनुज सैनी के 2 पॉइंटर होंगे। When it is on a review, we might not give it off like that, because it might not be that Kabaddi Kamal moment for me, Arshad, because it was going in for a review. It was a little conversational, if not controversial. So, you know, let's leave that moment there. And once again, this is a wonderful double thigh hold. And from being a last man standing, once again they've gone out there, Anuj Saini, and he sent out Vasant Murugan. तो
सुपर सेवी है नवीन, क्या बात है, इकलौते वहां पर मौजूद थे, अब 5 खिलाड़ी को वहां पर खड़ा कर दिया इस खिलाड़ी ने, बहुत ही अच्छा कार्य किया। और चेस में आप कहते हैं ना कि सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, प्यादा होता है, और वही प्यादा जब आपके विरुद्ध आपके खेमे में जाकर पहुंच जाए तो वो किसी को भी जिंदा करा सकता है। अब देखिए ऑल आउट की परिस्थिति नीलगिरी नाइट्स के पास आ चुकी है, क्या नीलगिरी नाइट्स इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन कर पाएगा? It's a super tackle situation, 3 defenders out there, so it should be easy as Manjeet Mitra has come in for his first ever raid in the match, and it's been a very, very long time ago that we've seen him raid. I think he'll go back empty-handed. That is what it will be sounding like, as Velavan wants to go out there, put in a solitary raid and come back. I think they will play on the super tackle situation now, the Nilgiri Knights, and if that happens, that'll be really nice, as they wanted a substitute raider. Yeah, that is why. That is why. They wanted a substitution to happen, and Richpal Jat comes in as Gopal Singh goes out. Raider for a raider. Right. आई थिंक शायद वहां पर गोपाल सिंह इतने बेहतर उनके स्टेट्स नहीं रहे डू और डाई रेड में, और रिचपाल जाट पहली रेड है, फ्रेश लेग जरूर होंगे, हालांकि मुकाबला ही बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा रेड्स लगाई नहीं किसी ने भी। रिचपाल जाट देखते हैं कि किसकी तरफ वहां पर अटैक करने जाएंगे नवीन, क्या यहां अटैक करने जा सकते हैं नंबर 66 जर्सी पर, क्योंकि वेलवन जब वहां से आएंगे तो एक मौका हो सकेगा। Yeah, as the Polony Tuskers watch it with keen eyes. Whoever he goes to attack on, and that was almost an escape for Richpal Jat. My God, सुपर टैकल, they fumbled on the tackle. Oh, Velavan saved it at the last minute. एक दफा लगा था, देखिएगा नवीन यहाँ पर फॉलो करते हुए आए थे, क्या ओवर रन न कर जाए, बट मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, जैसे वेलेवन को आते हुए देखा, नंबर 66 यानी कि मणिकंदन उन पर डाइव लगाई, और यहाँ आखिरकार जो आप कहते हैं ना कि फाइनल नेल इन द कफिन की जगह वो फाइनल फूल जो था उस टैकल में वो कहीं ना कहीं गार्लेंड डाला गया। यहाँ अनुज सैनी और वही लोकेश गोसलिया का कॉम्बिनेशन, मुझे फिर से देखना है नवीन की लोकेश गोसलिया किस पायदान पर थे, क्या इन पर थे? I don't think so. He was in the inn. I think he was there in the corner itself. But Anuj Saini, marvelous. He was in the corner as well. At this point, we'll go to Lokesh Gosalia. Even though Anuj Saini came from behind, sorry, Lokesh Gosalia will get it. And I think he's almost getting in. I think he should be now, what, 96? Yeah, I think. Yeah, I think, because one super tackle already. We will ask our co-producer Mohit also to confirm the same. Anuj Saini did very well, but that point will go to Lokesh Gosalia. As Rohit Yadav once again comes in a do-or-die raid situation, is it? No, it's a super tackle on situation. So, Periyar Panthers winning the toss will get the first option to raid as well in the second half. And Velavan, he wants to inflict the do-or-die raid. He says, come on Anuj Saini, come against us. We will have you covered. No, the official scoring says 3 points. So it's just one super tackle and one tackle as the half has been concluded. What a thrilling eliminator number 4 we are watching here. And this is just the beginning, I should say. And we will go out there for that break just to confirm 14-12. Harshit, 7 tackle points for the Periyar Panthers. Can you believe this? How did this happen? And for the Nilgiri Knights, only 3 as of now. So out of 7 tackle points, Lokesh Gosalia has got, just 3 out of it. All right, that's interesting. Let's slip into that short break and come back soon to see the Periyar Panthers raiding first in the second half as they have won the toss. और पिछले वहां पर क्रम में अपनी दोनों ही टीमें अपने अंदाज में खेल के साथ प्रभावित करते हुए नजर आई हैं। आप सभी को बच्ची एलिमिनेटर नंबर 4 है, आप सभी मत भूल जाइएगा, ये वर्चुअल सो कॉल सेमीफाइनल है जो इस मुकाबले को जीतेगा फाइनल खेलता हुआ नजर आएगा पॉलनी टस्कर्स के विरुद्ध। और पहला हाफ किस तरह से बीता है, किस प्रकार से व्यतीत हुआ है, ये हाईलाइट्स आप सभी के समक्ष है। नीलगिरी नाइट्स ज्यादा रेड में आपको प्रभावित करते हुए नजर आए, जहां सुंदर विश्वकन्नन को 4 रेड पॉइंट्स मिले, के हरीश को 2, एस मरीमुथु सेल्वम को 2 पॉइंट्स, मणिकंदन नेसामनी के खाते में नवीन 3 टैकल
पॉइंट्स गए हैं और इकलौते डिफेंडर रहे हैं जिन्होंने डिफेंस में पॉइंट प्राप्त किए हैं। अब देखते हैं कि क्या पेरियार पैंथर्स के साथ डिफेंस पॉइंट्स और आगे बढ़ेंगे, रेड पॉइंट्स कैसे एकत्रित होंगे। नवीन, ये मुकाबला ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बन चुका है। And this is what we wanted to see in the morning from the Chambal Challengers, isn't it? Against the Nilgiri Knights. Whoever wins or whoever loses, we want to see a big fight that has been put up. That is what we really want to see. But yeah, from the time Lokesh Gosalia has been retrieved back on the mat, this is a good beginning, right? As we will head into this, just a 2-point lead for the Periyar Panthers, and they will have the first option to raid first against a 3 defense format. It's a super tackle which is on 3 proper defenders, Manigandan, Suralamani, and of course, no, that's Nesamani and Santosh Srinivasan and Velavan Muruganandan. Now this is interesting where Manjit, I think, should go back probably just one more raid and ask Velavan to come in. And the problem, oh my God, Velavan! He knows what a big blunder he's committed. बहुत बड़ी मिस्टेक। और जो बॉर्डर लाइन की आप बात करते हैं, बॉर्डर लाइन छोड़िए, बहुत ज्यादा आके उस बॉर्डर लाइन पर आपने हमला किया था रेडर पर। मंजीत का कोई इरादा नहीं था वहां पॉइंट लेने का, ये तोहफा दिया है और गिव अवे पॉइंट था। देखिएगा नवीन, बहुत ज्यादा आगे से पहले बॉक लाइन पर थे और कितना दूर से जंप लगाई थी, ऐसा लग रहा था कि स्विमिंग पूल में वहां डाइव लगा रहे हो। बट ये गलती वेलेवन को भी तुरंत समझ आई। हाँ, नदी में मछली बह के चली गई, समझ आने की क्या फायदा। That's what it happens where the fish is already flown off. तो अच्छा लगा नवीन जिस प्रकार से अनुराग पछता होत के जब चिड़िया चुके खेत और अब पछता होत किया जब नदी में डूब चुकी है कुछ। Oh, Arvind Rajveer! He came in as a super substitute. Lokesh Gosalia said, "Why did you go?" He's just warning Manjit Mitra. Did I ask you to go for the tackle? Oh, just 1 point though. मनजीत मित्रा थोड़े से ज्यादा अग्रेसिव खेले और बहुत ही अच्छा कार्य किया। अरविंद राज, इनके बारे में हमने बात ही की थी ना, कोच ने भी कहा था कि ये भी पूरी तरह तैयार है खिलाड़ी और बहुत ही अच्छा इवेल्युएट किया। अच्छा मौका था पेरियार पैंथर्स के पास यहाँ ऑल आउट करने का। और लोकेश गोसलिया देखिए किस प्रकार से डाटा नवीन, और इसीलिए कप्तान बहुत ही प्रभावित कर रहा है, बहुत ही अच्छे अंदाज में अपनी टीम को लीड करा रहा है, क्योंकि जहां गलती होती है वहां शायद स्कॉल्ड करना भी बेहद जरूरी होता है। लोकेश गोसलिया पहली बार इस मैच में लोकेश गुस्सलिया हो गया, मतलब that is what it looked like. He was really angry with whatever Manjit Mitra did. But now Arvind Rajveer, he knows it's just a 2-pointer deficit, and he will need to go out there and don't go too deep inside because there is no bonus. And if that is the case, it'll be a do-or-die raid that will be coming in for them first, and only try out in a do-or-die raid and try and play on the super tackle situation. That is what they will try and do. And Anuj Saini again also will try to inflict the do-or-die raid. तो अनुज सैनी एक बार फिर से आए 3 के हाउस में। ये हाथ क्या चक्री नवीन, आई थिंक शिवाजी द बॉस में जिस प्रकार से वो हेलीकॉप्टर हाथ से घुमाने का प्रयास करते हैं रजनीकांत साउथ के और पूरे भारत विश्व भर के बहुत बड़े सुपरस्टार, हम फिर से रिप्ले में क्या देख पाएंगे अनुज सैनी को? कुछ नया हर बार अनुज सैनी लेकर आते हैं नवीन। What was he trying to mix? Come on Anuj Saini. आई थिंक यू वांट कि रेत घूमे मैं जाऊं अंदर। Yeah, और कुछ आटा गूंद रहे थे। I don't know what was he trying to do. He was trying to mix some wheat flour or what. I mean, he was just trying to get ready for dinner. No, Anuj Saini, come on. But yeah, that looked nice. That really looked nice. He was, I think, trying to distract the defender, maybe. But yeah, that's a good strategy. But Rohit Yadav now in a do-or-die raid. Super tackle situation on. Who is going to blink first? Nesamani wanted to blink it and change of directions. That is wonderful. Manigandan. Nesamani went for the ankle hold. It's a super tackle. And look at the change of direction that happened from Suralamani. That is a dangerous cover combination of Nesamani and Suralamani. वाओ, जस्ट वाओ नवीन। जरूर थोड़ा सा मणिकंदन नेसामनी यहाँ पर इंजर्ड हुए क्योंकि पहले से ऑलरेडी वहां पर कट था, पूरी तरह से उन्होंने पाउंस किया उनके नीज पर। बट ये जो कार्य किया मणिकंदन ने नवीन, अन्यथा रोहित यादव एस्केप करते हुए वहां अपना टैंगलिंग हेड निकालते और वहां पर 3 पॉइंटर 2 पॉइंटर अपनी टीम के लिए ले जाते। बट नवीन, थोड़ी दिन पहले एक प्रश्न आया था आज भी एक्सपर्ट में कि क्या ये दोनों मणिकंदन का वन ऑफ द बेस्ट कवर्स कॉम्बिनेशन है? अनडाउटेडली अब मैं कह सकता हूं कि हाँ, टोटली। एंड नाउ Marimuthu Selvam, he's just been revived from the bench into a do-or-die raid. He should be careful with Anuj Saini's double thigh holds. He should be careful with Lokesh Gosalia's ankle holds. So it is twice
Oh my God, he's gone out of the lobby. What a brilliant move from Lokesh Gosalia. He moved inside and behind the in defender. Wow. I've not seen that happen. Watch this. Oh my God. नवीन, इससे पता लगता है कि सभी कबड्डी के खिलाड़ी देखते ही देखते कितनी ज्यादा मैच्योरिटी, कितनी ज्यादा प्रेजेंस ऑफ कबड्डी यहाँ पर आ चुका है और ये एंटीसिपेशन एट द टॉप नजर आया नवीन। पता लग गया तो लोकेश गुस्सेलिया को कि अब मैं इस किक से बच नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं पीछे नहीं जा पाऊंगा, इसलिए वो थोड़ा साइड हुए और बहुत ही बढ़िया पेशेंस, धैर्य बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर होल्ड कर रखा है दोनों ही टीमों ने नवीन। If you really ask me what is that Kabaddi Kamal moment of the entire day, not just a match, is that Lokesh Gosalia will go back that replay once again. And I'll tell you what, Nesamani is already having few stitches on the top of his right eyebrow. And that is why he's feeling that pain, because stitches, it can hurt you. I think Arvind Rajveeran will be only going in for an empty raid if I'm not wrong. He might not try too much. But can we go back to that replay, previous round, of how Lokesh Gosalia went behind the in defender? Not this. Not this. I'm sorry. Not this, guys. This is a super tackle. Not this situation. I'm sorry. Something happened there on the mat. Anuj Saini once again. He's confident that he's got a point. And he's still walking around near the midline. 1 point. And he's attacked the raider Arvind Rajveeran. अद्वितीय अनुज, अद्भुत अनुज, क्या बात है। पहले वहां पर 2 पॉइंट रेड में लाए थे जब अपनी टीम को सेव किया था। ये देखिए चेन छोड़ी थी नवीन, चेन जैसे ही छोड़ी अनुज ने उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन किया और इनके खिलाड़ी पर टच किया। शायद अरविंद यही कह रहे हैं। Yeah, Arvind wanted to go for the ankle hold from the in position, isn't it? That is what he tried. Let's just ரெண்டு பேரும் ஆடுவாங்க கண்டிப்பா. நீங்க ஆடிக்கிங்க. ஏன்னா இங்க பாரு யார் ஒருத்தன் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்பன்ஸ் இல்ல. எல்லாமே டிஃபென்ஸ். அது முட்டாளம் வரை இருக்கு. பரவாயில்லை. நீங்க பரவாயில்லை. And he just said, hold the defense tight. And I really want to see that moment once again of Lokesh Gosalia going behind the in defender. I've never seen that. Oh my God. That's just marvelous. Yeah. As Manigandan himself comes into raid, that's good. Yeah. They don't want to get in a raider. और नवीन आपको मैं रोकूं, क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा मैच के कॉन्टेक्स्ट से दूर हम बात कर रहे हैं। बट जब पूरन शेखावत आए, उन्होंने पानी पिया ना नवीन, मुझे पिछले समर एडिशन के पेरियार पैंथर्स के कोच मोहित हुडा साहब याद आ गए। आपको भी जरूर याद होगा कि जब वो आते थे सिर्फ वॉलंटियर से पानी मांगते थे, एक गुट पानी का पीते थे और बाकी खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ समझाते थे। और एक और चीज से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ पिछले समर एडिशन के मुकाबलों को, आशीष नरवाल एलिमिनेटर्स में थे, उनके हेड पर भी वहां पर एक बहुत ही बड़ी व्हाइट पट्टी थी। क्या ये व्हाइट पट्टी निश्चितता से जरूरी होती है समर एडिशन में फाइनल तक के सफर को तय करने के लिए? I'll tell you something. Ashish Narwal is the only man who's made the physio team work overtime. Every part of his body had a bandage. But now, this is interesting as Suralamani has come in for a do-or-die raid. And we saw what he did. Remember, he went in for the back kick. Oh, that was too close. That was very, very close. He tried his best possible escape. Couldn't go out there against the dash. And Lokesh Gosalia doing once again what he does best. जी प्रॉपर तरीके से एंगल को कट आउट किया यहाँ पर और अच्छा साथ आया। पर जिस प्रकार से टर्न किया ना नवीन मणिकंदन ने भी, देखिए पूरे अपने हाथ को स्ट्रेच किया, बट अनुज की कहीं ना कहीं वो फुटबॉल किक की तरह जिस तरह से वहां पर स्वीप करते हुए ले गए उनके हाथ को, वो अच्छा कार्य था। बट अब नीलगिरी नाइट्स नवीन ऑल आउट हो जाएगी। पहले ऑल आउट के पॉइंट्स पेरियार पैंथर्स को मिलेंगे। अब ये लीड बढ़कर थोड़ी सी 6 अंकों की हो जाएगी इस एलिमिनेटर नंबर 4 में। Yeah, totally. But the all out was supposed to be for the Periyar Panthers, isn't it? As Anuj Saini came in and got that review in his favor. But then can we go back to that brilliant Kabaddi moment of the day for me? As the substitutions let it take place, that's okay. As Santosh Srinivasan comes in place of Vasant. So can we see what Lokesh Gosalia actually did in that do-or-die raid? That's very, very interesting. Sundar Vishwa Kannan has come in after the all-in. नवीन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नीलगिरी के लिए ऑल आउट ठीक है, क्योंकि बहुत देर से अपने रेडर्स को रिवाइव नहीं करा पा रहे थे। 3 डिफेंडर्स के साथ वहां लगातार मौजूद थे। अब सुंदर विश्व कन्नन और पूरी वहां पर साथ आ चुके नीलगिरी नाइट्स की, और इस बार बहुत ही अच्छा फ्लाइंग हैंड टच करने की कोशिश की थी, बट कवर्स ने इस बार अपने आप को पीछे अच्छा घसीटा। Somebody was asking Yendapur means why are you going in so deep? That is what the lip actually read. But yeah, Rohit Yadav, even he is coming
after a very, very long time. Yeah, it's been that sort of a defense, isn't it? Where they've not been able to very quickly revive their raiders and the cover defenders standing out there. It's just that walk line footwork that Rohit Yadav has. And Santosh Srinivasan just watches him dance around on the balk line, just asks him to go back. And now, I'll tell you something. Look at Marimuthu Selvam. He's not going near Lokesh Gosalia at all. He just directly goes towards it. And the ankle hold from Monu Prasad. Monu is a defender, Mari, on that left-in position. You need to just play him as a defender. नवीन विथ 5 डिफेंडर एंड 2 रेडर्स। एक बार फिर से वो स्ट्रेटेजी काम करती हुई देखिए, पहले तैयार थे, बैंडेड डाउन थे मोनू प्रसाद, और जैसे ही एस मरीमुथुल ने सिर्फ सिंगल बार ट्राई किया उनके आगे से चुराने का कुछ बोनस, और तुरंत वहां पर एंकल होल्ड पर गए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंकल होल्ड की वहां पर ग्रिप थी। मजा आया। लोकेश गुरसेले को अच्छा साथ मिल रहा है वहां पर मोनू प्रसाद से, और मोनू प्रसाद मुझे एक और पैंथर की याद दिला रहे हैं, अंकित सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस। वो दोनों इन पर खेला करते थे और बहुत ही अच्छा कार्य किया करते थे, और वही क्या कार्य मोनू प्रसाद कर पाएंगे। बट यहाँ रोहित यादव मौजूद है, क्या वो थोड़ा अंदर जाने का प्रयास करेंगे? All right. Wait. They have a hand touch is what they are claiming. And that is not looking right. The whistle came in as 2-3 whistles. As Mohan Gowda will discuss, Sagar Panchal and Akshay Desai, everybody will get into it. Sagar, all right. With his body language, it looks like Rohit Yadav did not have a hand touch on Velavan Muruganandan and looked inside the lobby. Oh my God, this is interesting. जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर कार्य चल रहा है। पूरन शेखावत साहब जरूर यहाँ पर उस निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं। अक्षय देसाई, सागर पंचाल, मोहन गौड़ा, राखी कुमारी वहां पर मौजूद हैं। इन चारों ने क्या मिलकर निर्णय लिया है? रेडर आउट, यानी कि रोहित यादव वहां पर बाहर जा रहे हैं, और शायद खुद रोहित यादव कह रहे हैं कि रिव्यू लीजिए या ना लीजिए, रोहित यादव ने यहाँ पर कहा है। Yeah, correct, because he knows that he did not have a touch. He very clearly knew it. See, it was a very, very big gap that was there. And Velavan immediately said he went out of the lobby without a hand touch. Yeah. அந்த கான ஜோன் ஆகாத கவர் ஆடு, கவர் போகணும்னு அது வந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, அதே மாதிரி அடிச்சிடலாம். நீ ஒரு தடவை ரைட்ல சி, ஒரு தடவை இங்கே ஃபுல் கோட் ஆடு, கண்டிப்பா முடியும். ஏய் சந்தோஷமா இரு, ஹோப் பாருங்க, சரியா முடியும். All right, that's what you need from the coach. He's told Marimuthu Selvam that first attack on Lokesh Gosalia, try and attack it, and then go towards the covers. Don't try and go too deep towards Anuj Saini when you're going for the running hand touch, as Sundar Vishwakandan has now come in. Manjit Mitra! He's been giving away points too easily. जी आज बहुत सारे पॉइंट्स मनजीत ने किए हैं, और मन इनके हमेशा अक्सर जीतते हैं यहाँ पर, बट आज थोड़ा सा यहाँ पर सोलो टैकल्स के लिए जा रहे हैं, और सुंदर विश्वकन्नन को लगातार यहाँ से एक पॉइंट्स का जरिया रहा है। नवीन, Manjeet should have gone for the dash, Arshit. Why was he trying to go for the back hold? I mean, side hold. It's not even a back hold. He was going for a side hold. Not needed at all. He should have just dashed him. You know, he could have had a 50-50 chance, as they could have gone in for that review also if that was needed. Yeah, that dash was more needed. And he missed out on that occasion. Now Richpal just has a kick on Velavan. Nothing there. They can afford to waste some time on the clock for the Periyar Panthers. They have that, lead where they can actually sit back and relax and say, let the Raiders of the Nilgiri Knights take all the pressure. Now look at this. Monu Prasad comes in on that left-in position. The moment Sundar Vishwakandan comes in, Monu Prasad is right there. So Sundara should watch out for that. जी हाँ, वहां पर सुंदर विश्वकन्नन पूरी तरह से ध्यान देंगे, और इस बार एम्प्टी हैंडेड वहां से वापस भी जाते हुए नजर आएंगे सुंदर विश्वकन्नन। अनुज सैनी इस बार रेड पर। अनुज सैनी देखिए, ये हर तरह से रेड लगाना जानते हैं। एक बार फिर से कवर्स के बीच में से जाकर पॉइंट लेने का प्रयास। और नवीन, मुझे इनकी सबसे अच्छी स्किल क्या लगती है, दोनों तरफ से रेड लगा सकते हैं। लेफ्ट रेड भी, राइट रेड भी। लेफ्ट रेडर के तौर पर इन्होंने अभी शुरुआत की, फिर राइट रेडर के तौर पर कार्य किया, इसलिए भी शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं वहां पर डिफेंस के मध्य। Anuj Saini you're talking about. So you decided that he's an all-rounder. Oh my God, I was thinking, who were you talking about? Right, Arshid, that was just a weak Humpy Heroes' defense. Right, no, he's good, he's very good. I'm not saying he's not an all-rounder. He's there, he's all. He needs to round up more nicely. He needs more experience. He needs more stuff to happen.
ये अभी तो सिर्फ शुरुआत है। डू और डाई रेड देखते हैं कि किस प्रकार से भागेगी पड़ेगी। रिचपाल जाट को लगातार इनके कंधों पर जिम्मेदारी मिली है डू और डाई रेड का। क्या इस बार कारनामा कुछ कर पाएंगे? स्लिप हुए थे, डिफेंस ने अपने आप को होल्ड ऑन करके रखा। 7 सेकंड से कम का समय शेष बचा है और शायद अब कोई गलती नीलगिरी का डिफेंस नहीं करेगा। चेन में नहीं गए थे बट उसके बावजूद पूरा कॉम्बिनेशन नीलगिरी नाइट्स का नजर आया। नवीन Again outside the back line. Look, the dangerous tackle for me. It had Richpal Jad all the options to go out there. Now, when you're standing in the cover position with the chain, why do you have to break your chain? And look at that right corner, Santosh Srinivasan coming in as a second line of defense. And now in a do-or-die raid is Sundar Vishwakandan trying his kick on Anuj Saini. Lokesh Gosalia, is he good in those blocks as well? We've seen everything from Lokesh Gosalia. Can he come across? No, he's not good in the blocks is what I feel. Is the day dashed out? 1 point, Nilgiri. Oh, Knights. yes. Jersey number 9 out. My God. He's not good in the blocks, Arshid. That's a bit of a weakness for our captain. Periyar जी और Panthers. बहुत ही अच्छा एंटी ब्लॉक भी किया। सुंदर 18, विश्वकन्ना ने बहुत अच्छा एंटी ब्लॉक किया, अच्छी तरह से बचाया और पूरन शेखावत Strategic साहब भी time out. नाखुश थे क्योंकि डू और डाई रेड का मौका था यहाँ पर सुंदर विश्व के पास। उन्हें ज्यादा एफर्ट्स वहां लगाने थे। यहाँ जरूर टाइम आउट मांगा गया है। नवीन पूरन शेखावत साहब कहेंगे कि ऑल आउट बचाना बेहद जरूरी है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय आ चुका है। नवीन सेकंड्स भाग नहीं रहे, मिनट भाग नहीं रहे, ऐसा लग रहा है बहुत तेज बढ़ रहे हैं। बेटा और बोनस हो जाए तो बार बार ट्राई करना, उस एडवांस का ध्यान रखना बेटा, ठीक है यार। लोकेश Oh, he's thinking where is सुने Lokesh अनुज Gosalia? ओए பேசி ஆடு நிப்பாடிங்க ஒன்றும் பாயிண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு பிரச்சனை இல்லை. சந்தோஷ் மிஸ்டேக் பண்ணிடாத. சரி நீ ஆடு. நீ வித்து செயினோட அடி. இப்போ செயின் விட்டு அடிச்ச எவ்வளோ ஒரு ரிஸ்க் பார்த்தியா? அது தேவையில்லை. வித்து செயினோட அடிச்சா ஈஸி, அழகாக தூக்கிட்டு வந்திருப்பான். செயின் விட்டு அடிக்காத. அங்கே நீ கார்னர் ஜோனில் அடிக்க ஜஸ்ட்ரா பண்ணலாம். உள்ள ஒன்று கட்டிங்லாம் வித்து செயினாக இருக்கணும். மிஸ்டேக் பண்ணிடுறாங்க. 110% what I told. Raja Ram is telling the cover defenders the same point. You did not go with the chain against Richpal Jad. That was a dangerous tackle. Nee chain vittu adicha. Adnala dhaan pathiya evlo risk aiduchi. That is what he asked. My God. And I don't have any psychological connections with Raja Ram as of now. Only Kabaddi mat is the connection. Now Gopal Singh has come in. Harshit, Yeah. do you want to talk aage ka rasta for Periyar Panthers or Nilgiri Knights? Because it's gone either ways. जी हाँ, My कभी भी God. मुकाबला पलट रहा है नवीन, क्योंकि ये गोपाल सिंह को भी अंदर बुलाया गया है। रिचपाल को पहले इनकी जगह पर भेजाया गया था अंदर की तरफ। एक बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। 6.5 मिनट से कम का समय शेष बचा है। 19-22 का यहाँ पर स्कोर है। 3 मिनट की लीड और 3 पॉइंट्स की लीड क्षमा की जगह पेरियार पैंथर्स के पास है। अनुज सैनी एक बार फिर से रेड पर है एज ए लेफ्ट रेडर शुरुआत करते हुए। अभी तक एम्प्टी हैंडेड वहां पर गए हैं। देखते हैं कि क्या कुछ प्रयास करेंगे यहाँ पर। सिर्फ 3 का हाउस था नवीन पेरियार पैंथर्स के पास। Good that Anuj Saini actually went back without being a hero there. And Mari knows that it is going to be a do-or-die raid for the Periyar Panthers as Gopal Singh now goes in. And this is interesting because Velavan in that left corner, as Raja Ram, the coach, said, no making mistakes. Again! Save error! Save error! They broke the chain! They broke the chain! That is a big error for giving away 2 points. Raja Ram just told the Manikandan combination to not break the chain. They broke the chain. जी यहाँ पर क्या काउंटर एक्शन स्किल्स यहाँ पर नजर आई गोपाल सिंह की, बहुत ही जीनियसली। और जो राजाराम साहब ने कहा था कि चेन तोड़कर नहीं जाना है, चेन वहां पर तोड़ी। और गोपाल सिंह की नवीन काउंटर एक्शन स्किल्स की हमेशा बात करते हैं, बहुत ही डिसेप्टिव रेडर है। परफेक्ट दुबकी नवीन। Green card, jersey pulling, no jersey pulling. Periyar Panthers coach, please come. क्या Yeah, मणिकंदन jersey का pulling. टच ही नहीं हुआ नवीन? अजय बाहर Jersey जा रहे pulling. हैं। Panthers या coach, please come. वही सोचूं कि अगर वो मैट पर Sir, मौजूद हैं और पूरन शेखावत साहब को भी यहाँ Periyar पर ग्रीन Panthers कार्ड मिला है। coach, green card, disturb the game. All right. Next season for sure, Kabaddi Spirit Award. Even for the coach, if you get a green card, you're going to lose points on that. And it's a do-or-die raid to rub insult to injury here. The Nilgiri Knights have got a do-or-die raid after that unwanted chain break tackle. Running hand touch as he got on Monu. No, he's not. Sundar Vishwakandan, this is a good opportunity here because Lokesh Gosalia is not around. 9 seconds, 8 seconds. I think Sundar Vishwakandan gave up. He gave up. He was Red tired. out.
1 point नवीन। Periyar Panthers. लेफ्ट फ्लैंक पर अटैक कर सकते थे क्योंकि वहां पर लोकेश गोसले नहीं मौजूद थे और परमानेंट लेफ्ट कॉर्नर कोई वहां पर नहीं मौजूद था। सुंदर विश्वकर्णन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए वहां रुक गए। नवीन देखिए दोनों एंकल्स कहीं ना कहीं अनुज सैनी की गिरफ्त में उन्होंने दिए और अनुज सैनी ने अब बताया कि वो डिफेंडर भी है, अपने क्लचेस में फंसाए सुंदर विश्वकर्णन को। पर 25-19 नवीन, 4.5 मिनट से कम का समय शेष बचा है। पेरियार पैंथर्स शायद अब ये टाइम को किल करना अफोर्ड कर सकती है। No, they can afford to do that from the last 4 minutes of the match. And running at touch, Santosh Srinivasan was having an error in his footwork. 1 point Periyar Panthers. As, Jersey number 88 out. Now, Lokesh Gosalia has revived. What a right time for him to be revived. ऑल्सो नवीन ये हैंड टच बहुत अच्छा था, पर पूरन शेखावत साहब क्या अपने रीडर्स को रोटेट कर रहे हैं नवीन। पहले गोपाल सिंह बाहर गए, रिचपाल अंदर आए, रोहित यादव बाहर गए, गोपाल सिंह अंदर आए और अब राहुल चौधरी अंदर आ रहे हैं। गोपाल को वापस बाहर बुलाए कि गोपाल अभी आपका कार्य हो चुका है, ज्यादा अब हमें डिफेंडर चाहिए। Yeah, very good thinking. Really good thinking from Puran. And as Marimuthu comes in, he needs touch points. He goes for his trademark kicks. Anuj Saini escapes, challenges him, goes towards Lokesh Gosalia. Anuj Saini wanted Anuj. Come on, Lokesh Gosalia gave the signal to Anuj Saini to go for the tackle. And Mari just escaping that at the right time. It's still not over this. या मारी मुथु सेल्वा में कैसे खिलाड़ी है नवीन। पिछले जब मैचेस नीलगिरी नाइट जीता है, इन्होंने एक ऐसी सुपर हिट लगाई है जो इनके लिए मैच जिता देने वाली सुपर हिट रही है। अनुज सैनी जरूर दोनों थाइस पर वहां पर जाना चाहते थे, पर वो बॉर्डर लाइन பாயிண்ட் நீ கண்டிப்பா போன ஸ்ட்ரைக் பண்ணு, பேக் பண்ணு, அடிச்சானே வந்துரு. யாருக்கு உள்ள போடா அண்ணா சரியா. இப்போ ஒரு ரைடு ஆடிக்கலாம். இந்த ரைடு பாத்துக்க உள்ள வந்தா நான் உள்ள வர மாட்டேன். அவன் லைன் ஏறிட்டு கீழ தான் ஆடுவான். லைன் ஏறிட்டு கீழ ஆடுவான். நீ ரைடு எவரி ரைடு ஆடிரு. Okay, so he says the raider is going to waste time. Line eri ulla varamata. That means he will not come deeper inside the balk line. That is what he is told. It's very clear. Yeah, he crosses the balk line, makes the raid legal, and then he wants every raider to go out there and get points. But look at this. Richpal Jat, in the blink of an eye, goes for a lovely kick and gets it on Velavan. नवीन अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल। जब हमें दोनों रेड्स में लगा कि रिचपाल जाट जो है ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे और लोकेश गोसलिया जैसे पीछे गए थे वैसे ही वहां पर वेलेवन नहीं जा पाए, बहुत ज्यादा पीछे चले गए थे और रिचपाल जाट जानते थे कि राइट कॉर्नर कहां खड़ा था। नवीन बहुत ही बड़ा मौका उनके पास था। Yeah, totally. Lovely ankle hold. Lokesh Gosalia is getting closer and closer to that 100 tackle points. Even without this ankle hold, can we go to that Lokesh Gosalia brilliance? That's okay. This is a solitary replay, guys. This is fine. This is not worth to be seen on the replay again. That's fine. Can we see that Lokesh Gosalia going behind the in-defender? That is more worth to be seen again and again as a Kabaddi skill, as Rohit Yadav will kill all that 30 seconds that has been left in this raid. Probably because Nesamani is just that one defender. You will go back empty-handed. Now, can we get that on the replay at least now? I wonder not. I think we will have to leave that out there. I think... Time out. Periyar fine, Panthers. thank you. Thank you so much at the last of it. This is the most Kabaddi brilliant moment I have ever seen from a left corner defender. I have not seen any defender go behind the in-defender and stand out. அவன் ஆடினாண்ட பார்த்துக்கலாம். ஆடினா ஒரு டிஃபென்ஸ் ஆடிக்கலாம். ஆறு அடிச்சு இவனையா சரி ஓகே சரி இல்லடா நான் வாசிக்கலாம். There's no point of discussion. It's about Arvind Rajveeran getting touch points. That's it. That is all. 8-point deficit and he can't take a walk in the park. He needs to utilize that strong legs and shoulders of Arvind Rajveeran. He really needs to come out here and become a Veeran of a raid. That's what he has to do. Oh, bonus +1 is it? 1 point. Yeah, Nilgiri Knights. no bonus Jersey number 5 out. जी हाँ, 1 पॉइंट वहां पर मोनू प्रसाद एक बार फिर से शायद एंकल होल्ड की वहां तैयारियां कर रहे थे, बट एंकल होल्ड से जरूर अरविंद राज ने बचाया और शायद ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी क्या बोनस के लिए जाना चाहिए। नवीन रिव्यू है शायद नीलगिरी नाइट्स के पास, वी विल चेक, बट हाँ जो भी हो अभी यहाँ रिव्यू शायद नहीं लिया गया है। 28-21 3 खिलाड़ी फिर से मौजूद होंगे। रोहित यादव बिल्कुल ज्यादा अंदर नहीं जाने का प्रयास करेंगे और नवीन अब पेरियार पैंथर्स 1-1 पॉइंट पे अगर देता है तो ज्यादा नीलगिरी नाइट्स के पास 3 रेड ज्यादा से ज्यादा अब आ सकती हैं। Yeah, that is why you need a multiple point rate from Arvind Rajveeran. He needs to go out there, confuse the defense and put out a multiple point rate. That is what is needed. Can Arvind Rajveeran
go in and raid like a lifetime of an opportunity that he's got. Now, because this is very, very important. No, he just plants his foot in front of Anuj Saini. That's all. That's all he's been allowed. Again, goes for the kick. Don't step into the lobby. Be careful. That's it over. It's the Raiders of the Nilgiri Knights who have let them down. And now, it's almost like the Periyar Panthers are storming into the finals. अनुज सैनी क्या बात है, देखिए ऐसे तैयार थे, जानते थे बोनस का प्रयास करने वाले हैं रविंद्र राजन, इसे कहते हैं प्रिडिक्टेबल मूव था वहां पर और अनुज सैनी वहां पर तैयार थे, बट नवीन क्या मैच रहा है यहाँ पर। पेरियार पैंथर्स का परफेक्ट स्ट्रेटजीज, परफेक्ट होमवर्क, 2 रेडर्स 5 डिफेंडर्स के साथ खेलने का इनका जरिया एक और बार सही साबित होता हुआ नवीन, और अब थोड़ा सा बदलाव। Yeah, totally. As he wants everybody to use that opportunity to get into the mat for that do-or-die raid on a super tackle. Right, Ashit, I'll tell you what. This is the second time we are watching this as Abhiram has stepped out of the end line. That's the all-out. That's the all-out. That's it over. Velumalai Murthy does not get it. And I think teams now should start to realize one thing, that they'll have to go out there and actually make sure that, you know, how do you play as a team to play 2 matches in a day. We have not seen any team do that. Palani Tuskers in the Puducherry leg, they had to play 2 matches in a day because they had to play 1 in the morning and 1 in the evening for the finals. They lost the finals. And if you remember, Nanded Chambal Challengers of Nilesh's team, remember, in Pune, they also had to play 2 matches in a day. They are, you know, they lost it and they got eliminated. Here, Nilgiri Knights, they won 1 match in the morning. Second match, they'll have to now realize how to win 2 matches in a day. And that was a very good time as well. From morning 10:30 to now at 8 p.m. or 7:30. That's a very long time. So I think that is where the teams need to really understand about the strategy, as the Periyar Panthers will go through to the finals and meet the Palani Tuskers in the finals on the 19th of July. जी हाँ नवीन, छोटे छोटे बवंडरों से ये तूफान नहीं उठ पाएगा, यूं ही सैलाब लिए जब कोई आएगा तूफान भी उठेगा और सैलाब भी बनेगा। क्या खेले हैं आज पेरियार पैंथर्स, वो जज्बा, लोकेश की निगाहों में वो कार्य, पूरन शेखावत साहब के चेहरे पर वो मुस्कुराहट, मोनू प्रसाद का शानदार प्रदर्शन, लोकेश गुसलिया के आज पुनः हाई फाई, और ये मैच पेरियार पैंथर्स ने जीता है। पिछले एडिशन के विजेता डिफेंडिंग चैंपियंस पेरियार पैंथर्स ने नीलगिरी नाइट्स को पटकनी दी है। नीलगिरी नाइट्स एलिमिनेटर्स में लगातार जीतकर यहां तक पहुंचा, वर्चुअल सेमीफाइनल में आकर मुझे लगता है कि एम्पल परफॉर्मेंस के बाद हार मिली। This was a very, very good fight, that is for sure. No doubt at all for the Nilgiri Knights. But the only problem was where, you know, their raiders actually did not go out there and get any raid points when it was needed. And that all out where Periyar Panthers actually survived, that was a big problem. That was a big problem where it was not there on the all out, right? As that is what has been needed. जी हाँ नवीन, बिल्कुल आपने वहां पर सही कहा। निश्चित तौर पर एक बहुत ही अद्भुत ही मुकाबला था और दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छे अंदाज में खेली। और नवीन, फिर भी मैं इस मैच को यही मानता हूँ, अनुज सैनी ने जो 2 पॉइंट लाए ना नवीन, वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य था। छोड़ दो, अभी वो हो गया डिस्कशन। जी हाँ, पर नवीन वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वहां से ऑल आउट को बचाया वहां पर। मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, अभी हो गया, क्योंकि see on a review thing you should not be talking too much, so let's leave it at that. Periyar Panthers gone to the finals, let's all be happy with that, that's okay. या अनडाउटेडली वहां पर पेरियार पैंथर्स आज अच्छा खेले। नीलगिरी नाइट्स बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन के साथ आए हैं और बहुत ही अच्छा डिफेंस आज लोकेश का रहा। सुंदर विश्वकर्मा ने अपना पूरा प्रयास किया और बहुत ही टेक्निक कॉम्बिनेशन आज कवर्स का हमें देखने को मिल रहा था। तो ये मैच बहुत ही अच्छे से फ्रेम अप हुआ, बहुत ही अच्छी तरह से दोनों ही टीमें खेली और आज कबड्डी की एक बार फिर से पुनः बड़ी जीत हुई है। युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन को मिल चुके उनके टॉप 2 फाइनलिस्ट, एक तरफ होंगे पेरियार पैंथर्स, दूसरी तरफ होंगे पलनी टस्कर्स। Totally. And as I said, it's the 2-match strategy. The teams should realize how to win it. It is the format of the series. They can't go out there and complain anything about that. And it is that very important moment that they'll have to realize how to get out of it. 2 all-outs.
That is the big difference. And once again, the defense not working out well for the Nilgiri Knights, going out there and giving away all those extra points. And look at this, 12 tackle points for the Periyar Panthers, where they stopped Sundar Vishwakannan, where they stopped Marimuthu Selvam, and it was that Monu Prasad coming in as a fourth defender on the mat with 2 raiders. That is what was a big victory here for the Periyar Panthers. That's wonderfully done. जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन मोनू प्रसाद की आज फिर से वो स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा कार्य किया। बट सुंदर विश्वकन्नन 12 रेड्स आज लगाई, 7 रेड पॉइंट्स मिले। पहला हाफ इनके लिए बहुत अच्छा रहा, दूसरे हाफ में ज्यादा रेड पॉइंट्स इस खिलाड़ी को दिया नहीं पेरियार पैंथर्स के डिफेंस ने। Brilliant, totally brilliant work as well. And where is Lokesh Gosalia? Oh, only 5. We need to wait for the finals for him to get to the 100 tackle points. I'm sure he will very easily do that in the finals, and I'm really happy for Lokesh Gosalia as he will be getting another chance. 5 tackle points today out of the 7 tackles attempted. Brilliant work. As we will slip into a short break and come back soon, as tomorrow we will have the finals at 8 p.m. of the Palani Tuskers and Periyar Panthers. After the break, we will have the post-match award ceremony.
इस चमचमाती हुई ट्रॉफी के और एक कदम हम नजदीक जा चुके हैं। आइए आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑफ एलिमिनेटर नंबर 4 सो कॉल्ड वर्चुअल सेमीफाइनल ऑफ दिस युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन 2023। और जैसा ये सेमीफाइनल की हमें उम्मीद थी, तत्पश्चात वैसा ही सेमीफाइनल हमारे कदमों के नीचे और साथ ही साथ कदमों के थिरकन के साथ कबड्डी का ये निरुपम खेल नजर आया है। आइए इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं थैंकिंग ऑल आवर पार्टनर्स। फर्स्ट ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैन कोड फैंटेसी पार्टनर ड्रीम 11, फिजियो partner Department of Sports Science JSS College of Physiotherapy, Hospitality partner Ginger Hotel और Health Care partner Ramakrishna Specialty Hospital। और आज हमारे साथ प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं मिस्टर नीरज सिंह सर, हेड शेफ जिंजर होटल, एंड दुष्यंत शेट्टी सर, मैनेजर ऑफ जिंजर होटल। हम आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे सर इन दिस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। ये मुकाबला दोनों टीमें चंबल चैलेंजर्स के किले को ध्वस्त करके आ रही थी, पर पेरियार पैंथर्स प्रॉपर ओवर के साथ साथ प्रॉपर स्ट्रेटेजीज को उन्होंने इनिशिएट किया और प्रॉपर अंदाज में नीलगिरी के विरुद्ध एग्जीक्यूट किया और इस मुकाबले को जीता 35-22 के साथ और बने हैं इस मुकाबले के पश्चात यहां दूसरी फाइनलिस्ट युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन की। आइए बात करेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की। शुरुआत करेंगे फर्स्ट विद द बेस्ट विनर ऑफ द मैच के साथ, जिन्होंने बहुत ही एफर्वेसेंट परफॉर्मेंस आज अपनी टीम के लिए कर दिखलाया है। वो है नीलगिरी नाइट्स के सुंदर विश्व कन्नन। फिर से आज उनका जादू चला है और 7 रेड पॉइंट्स उन्होंने आज अपनी टीम के लिए प्राप्त किए। तारीफ करेंगे इनके प्रदर्शन की। और आइए सीधा ले चलेंगे आप सभी को बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की तरफ, जो रहेंगे पेरियार पैंथर्स के, जिनके सुप्रीम परफॉर्मेंस की सुप्रीमेसी लगातार यहां पर जारी है। लोकेश गुसलिया आज भी बनाया शानदार हाई फाई, बट उस हाई फाई के साथ साथ इतना इंपैक्टफुल और इफेक्टिव प्रदर्शन निश्चित तौर पर बहुत ही अद्भुत था। And now the time for the कबड्डी कमाल ऑफ द मैच। और बड़ा मुश्किल था हम सभी के लिए, क्योंकि पूरा मुकाबला निश्चित तौर पर एक डेडली बैटल, नेक टू नेक बैटल के दौरान नजर आया। और पूरे इस मुकाबले में कमाल के पश्चात भी अगर सबसे कमाल मूवमेंट्स नजर आए तो वो लगाया था पेरियार पैंथर्स से एक ऐसे खिलाड़ी ने जिन्होंने अपनी टीम को ऑल आउट से बचाया और परफेक्ट के साथ परफेक्शनिस्ट डुबकी का मंजर बनाया। वो थे गोपाल सिंह। पर क्या अद्भुत ये मैच, अद्वितीय मुकाबला। निश्चित तौर पर बहुत ही रिलेंटलेसली दोनों ही टीमों ने अपने रिडेंसियस परफॉर्मेंस को कैरी फॉरवर्ड किया। बट कहते हैं ना, अ परफेक्ट टाइम टू राइट था पेरियार पैंथर्स के लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। और जिस प्रकार से समय पर कार्य कर बनी है ये दो टीमें, पलनी टस्कर्स के साथ पेरियार पैंथर्स, जिन्होंने बनाई है फाइनल में अपनी जगह, तो हम पूरी तरह से इंतजार करेंगे उस फाइनल पर मुकाबले की। बट एक टीम का निश्चित तौर पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी, जिन्होंने कई सारे अप एंड डाउन देखे इस पूरे एडिशन के दौरान, पर जिन्होंने हमेशा सीखा तो उभरना सीखा था, वो था नीलगिरी नाइट्स का परफेक्शन परफॉर्मेंस के साथ। तो आइए इस एक्सेंचुएट करते हैं इस परफॉर्मेंस को, और उन्हें जाएगा इस समर एडिशन का ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि तीसरे पायदान पर करेंगे वो समाप्त। आइए अब हम समय है हर एक खिलाड़ी को इंडिविजुअली फेलिसिटेट करने का, तो मैं वन बाय वन सभी टीम मेंबर्स को यहां करूंगा इनवाइट कि आपका ये गेस्चर, आपका ये प्यार स्वीकार कीजिएगा युवा कबड्डी सीरीज के समक्ष। तो सबसे पहला नाम इस क्रम में होगा विलवन मुरुगनंथन, जिन्होंने बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं जीती है इन सभी द्रविडियन और साथ ही साथ पूरे भारतीय क्रम की तरफ से।
शायद एक परफेक्ट लेफ्ट कॉर्नर के रूप में नजर आए खिलाड़ी। और अगले नाम की तरफ चले तो वो होंगे के हरीश। एक और बार शानदार, इनका नाम इस पूरे समर एडिशन में रॉकेट हरीश के नाम से जाना जाता है। और जब इनके पास लॉन्च पैड होता है, युवा कबड्डी सीरीज ने उन्हें वो लॉन्च पैड दिया कि जाइए और रिलीज कीजिए अपना शानदार प्रदर्शन। एस मणिकंदन सुदलई मणि, इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए, परफेक्ट कवर पोजीशन पर इन्होंने ही मैन की तरह, हल्क की तरह डैशेस कर दिखलाए हैं। अब जिनका जादू चला है लगातार वो थे सुंदर विश्वकर्णन एंड आर्टिलरी मैन, एक ड्राइवर सन जिन्होंने पूरी तरह से नीलगिरी नाइट्स को ड्राइव कराया इस बड़े सेमीफाइनल तक। With the power of triple S, the perfect right corner, S संतोष श्रीनिवासन। और अब बात करेंगे एक और ऐसे डिफेंडर की जिन्होंने जब जब मौका मिला कोच की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से इन्होंने आकर हमेशा अपना 100% दिया, वो थे एस अभी कुमार। लेकर चलेंगे आप सभी को एक और ऐसे रेडर की तरफ जिनकी तबीयत खराब हो या फिर कोई इंजरी हो, हमेशा अपनी टीम के लिए रहते हैं मौजूद, वो थे वसंत मुरुगन। और अब अगला नाम एक नए खिलाड़ी के तौर पर टीम में जुड़े, बट आते ही इन्होंने सभी के दिलों पर राज किया, वो थे जॉर्ज विविन। जब जब वेल थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म होते, इस खिलाड़ी ने हमेशा कहा कि कोच मैं तैयार हूं, वो थे एलुमलई मूर्ति। अब बात करते हैं एक और ऐसे लेफ्ट रेडर की जिन्हें भी जब जब अवसर मिला इन्होंने पूरी तरह से एनकैश किया, वो थे अरविंद राजवीरन। और वैसे रेडर को मैं बुलाऊंगा जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है और चर्चा का विषय रहा है ये परफॉर्मेंस कार्य, और साथ ही साथ इनके लंबे बाल, वो थे अजय नंदा। और अब हम बात करना चाहेंगे इस खिलाड़ी की जिन्होंने पूरी तरह से 7 मेंबर्स के तौर पर एक साफ प्रदर्शन करने की कोशिश की, वो थे केशवन राजा। जी और अब बुलाना चाहेंगे एक ऐसे मणिकंदन खिलाड़ी को जिन्होंने कवर पर बहुत अच्छा किया, द परफेक्ट प्लेयर फॉर द कॉर्नर, मणिकंदन निजामनी। और जिनके किक बहुत ही डेडली है और बहुत ही परफॉर्मेंस जिनका सब्सटेंशियल है और एम्पल है, वो थे उनके कैप्टन एस मरिमुथु सेल्वम। और अब जिनके चलते लगातार क्रम बहुत ही अच्छी तरह से चला है, वो थे इनके मैनेजर अखिलेश मेसा साहब। और अब चलेंगे हम हमारे उस रिचुअल्स की तरफ जो युवा कबड्डी सीरीज की तरफ से एक केक पर चेरी जिस तरह से दी जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर कार्य किया जाएगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पर विकास गौतम सर को भी निवेदन करना चाहूंगा, द सी ऑफ युवा कबड्डी सीरीज। और मैं सबसे पहले यहाँ पर इन्वाइट करूंगा हमारे कोच राजाराम, बहुत ही शानदार अंदाज में इन्होंने कोचिंग की, और चेक कलेक्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मरिमुथु सेल्वम भी प्लीज इन्हें ज्वाइन करें। और कोच जो निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़े हकदार रहे हैं इस नीलगिरी नाइट्स के प्रदर्शन को, एक रिवोल्यूशनरी परफॉर्मेंस जिन्होंने कर दिखलाया। चैलेंजर राउंड में लगातार हार के पश्चात अपने आप में दिखलाया वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ अनुसंधान कर अपना लाजवाब और A+ गेम का अनुसरण किया है इस नीलगिरी नाइट्स ने। और इस पूरी टीम का हम बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं, और निश्चित तौर पर इनकी फाइटिंग स्पिरिट, इनकी शानदार डिफेंस और ऑफेंस के मिक्सचर को मिस करेंगे। बट अभी यहां से आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही जल्द वहां पर समय होगा जहां पर हम आप सभी के साथ कल जुड़ेंगे यहां पर क्रम में। बट इन सभी की टीम फोटोग्राफ की तरफ मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज आप एक चेक के साथ हमें ज्वाइन करें, टीम मैनेजर्स, टीम कोचेस। और ये कितना सुंदर और कितना शानदार दृश्य है। ओके सो चलिए अभी इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन से मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, बट जरूर अब जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ जहां पर इस मैच की और ज्यादा ब्रीफ में बातें की जाएंगी पोस्ट शो में।
Logesh, bro. Satish. Satish. Panthers hunted in their own style. क्या दिलकश हैरत अंगेज ये मुकाबला था और पेरियार पैंथर्स के लिए कहना पड़ेगा खूब लंबी तानी है, रुकने की नहीं ठानी है और बहुत ही अच्छी तरह से इस मुकाबले को आर्किटेक्ट किया और बहुत ही ग्लोफुल स्माइल के साथ इन द फाइनल जाएंगे. बट माय इमीडिएट लेफ्ट मेरे साथ है नवीन शौरी. नवीन, आपने ये कलर पहले पेरियार पैंथर्स के लिए शायद चूज कर लिया था. Absolutely. No, I also had those bikes, as I said in the pre-show. Whoever wants to take it can go with the bike, and Periyar Panthers deservingly have gone to the finals. But Harshit, even before we go out there and talk everything about this match, one thing, Harshit, that I was telling in commentary also. See, Yuva Kabaddi series is got the format of demanding one team to win 2 matches in a day. They have to do it. There is no going back on that. We've seen history being, a very big example where no team has ever won 2 matches in a day, but that cannot be an excuse at all. Because if you look at what happened for the Palani Tuskers in the Puducherry leg, they won that morning game, and the evening match they lost the finals. And then in the Pune leg, we saw Nilesh's team where the Nanded Chambal Challengers, they won the morning match, evening match they could not win, they could not go to the finals. Today Nilgiri Knights, they won the morning match and they could not win the evening match. Actually, this is not done. I mean, I'm really sorry. I'm being a little, too very harsh on the teams and the players. I'm sorry, but that is the format, Harshit. That is the format of Yuva Kabaddi series. Every team should be ready somewhere, some stage of their, series journey in any edition. They will be demanded to win 2 matches in a day. I think they have to be mentally prepared for that, physically be ready for that. I think today the Raiders of the Nilgiri Knights, I think they did not go out there and get the points as they did in the morning. I saw some bit of energy lacking, some bit of fire being burnt down. So I think, as I said, the teams need to be ready to win 2 matches in a day. जी हाँ, तो प्रॉम्प्टली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वहां पर कि आपको दिन में एक कभी ना कभी स्तर पर जाकर 2 मुकाबले खेलने पड़ सकते हैं, या तो आप फिर क्वालीफाई 1 के लिए और सीधा फाइनल के लिए. Exactly. Do that. Like Palani Tuskers, go out there and go to the finals and take 3 days break. Do very, very well. See, again, Yuva Kabaddi series is not here to give you that sort of a nice, warm place to, make you feel better and all. No, it is the hardest challenge. It is the toughest challenge. And no, any professional league or anybody does 3 series in a year. It's only Yuva Kabaddi series. So you will be tested. Only if you pass in this test, you will play for India. You will go for the bigger stage. That's all.
जी हाँ, तो आज भी एक वैसा एग्जीबिशन यहाँ पर नजर आया ना कि सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। शुरुआत कैसे हुई पेरियार पैंथर्स के लिए, शुरुआत में डिफेंस में पॉइंट आया था, मनजीत मित्र ने वो कार्य किया था। उसके बाद से दोनों ही टीमें बहुत अच्छा खेली। पहले पेरियार पैंथर्स ऑल आउट की तरफ थी, नीलगिरी नाइट्स ने बहुत अच्छा कार्य किया। बट आइए अब बात करते हैं, अगर मैच की समरी की न हुई तो टैकल पॉइंट्स में कहीं ना कहीं हमें शायद अंतर बड़ा देखने को मिले। Yeah, totally. It was very good because the defense of the Nilgiri Knights, of course, they did not get many pointers, but the defense of the Periyar Panthers got more points. And the only reason for that, as the summary will be fired up very soon, Ashit, it's because of Lokesh Gosalia. There, he was 94 on the match before it began, and with that 5 tackle points, I think this is a little wrong on the graphic. That's okay. We will just take it off. Everything will happen. We are in a live situation, so everybody should be ready for everything. That's fine. That's fine. We will take it off. That's okay, guys. We will go ahead with this. So, see, what is Lokesh Gosalia has done is very simple. That he's gone out there and gone ahead only against Marimuthu Selvam. He did not go out for the dash. Remember, we said Lokesh Gosalia on the dash with Sundar Vishwakandan. He just couldn't dash him off. So he plays for his strength. I always want every player to watch Lokesh Gosalia and learn that how to play for your strengths. 99 tackle points. What else you need? And yeah, you play for your strengths, you will be definitely winning. No. जी, और ये एलिमिनेटर नंबर 3 सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस मुकाबले की, और जहाँ पर आज सुबह शुरुआत हुई थी। और आइए अब चंबल चैलेंजर्स इस मैच की बात करें तो 23 रेड पॉइंट से 7 टैकल पॉइंट से नवीन, और कहीं ना कहीं दृश्य में याद दिला रहे कि टॉप 2 में समाप्त करने के बाद पहली टीम बनी है चंबल चैलेंजर्स इतिहास में जो बाहर हो गई हो। I think, Harshit, the only thing that we need to go out there and tell is their psychological weakness. That has been the problem. I always believe in this. Your physical strain, your physical endurance can be increased. Your physical strain can be reduced with any supplements, tablets, or anything that will boost you up if you're weak. But if psychologically, if you're down, and I think that is what we saw in the Wuhan virus situation where the lockdown was, many people were psychologically being bad. That is what I felt, Chambal challengers were. They were in a lockdown of themselves. Psychologically, they were weak. They were losing out matches. And I also asked Pradeep Yadav, the coach, asking, why didn't you go out there and boost like the manager Durmit did? No, why didn't you? No, Pradeep Yadav was saying, no, physically, I was feeling a little not okay. I was feeling feverish, and that's why I could not go, because winning, losing is a very, a common thing. Yeah. He's an experienced man. He's seen a lot of matches. But he said, physically, I was not okay. Meri saas phul rahi thi. That's what he said. So that is his point of view. We have to put it in front of the people. Anybody watching this and say, oh, why did Pradeep Yadav did not come for a timeout that was being taken for the coach? I very clearly want to say this. Pradeep Yadav sir came up himself and he spoke to me and said, no, I was a little feeling not okay. I was not able to breathe. I was having breathing issues, so I could not get up and go. We should give it up for him, isn't it? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आप प्रॉपर एक्सेप्ट करना चाहते हैं ना वहां पर कि जो हुआ, कैसे हुआ, कहां से हुआ, कई सारे दर्शकों के मन में प्रश्न थे, बट आई होप कि वो प्रश्न बहुत ज्यादा क्लियर हुए होंगे। बट प्रश्न and also every story has two sides. So our work is to put out two sides of the stories. We felt that Pradeep Yadav was not going in and motivating, but the reality is something else. He was feeling breathlessness. So that is the two sides of the story. जी हाँ, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट आज कहीं ना कहीं ब्रेक जो उन्होंने किया ना, वो बहुत ही शानदार था, और जिन्होंने पूरी तरह से बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया वो थे उस मुकाबले के एस मरीमुथु सेल्वम। अगर हम एलिमिनेटर नंबर 3 की बात करें, एक शानदार 10 पॉइंट का क्रम उनके पास नजर आया था। 10 रेड पॉइंट्स उन्होंने वहां प्राप्त किया और सुपर 8 बड़ी उन्होंने उस मैच में लगाई। तो आइए उनके इस प्रदर्शन पर एक जल्दी से निगाह डाल लेते हैं। It was a very good morning for the Nilgiri Knights. I should say that morning was very, very good as we look at Marimuthu Selvam and his raiding abilities. That was fantastic. As a right raider, he went across, and of course, he had a very weak left corner as well. Rehan Sheikh and Javed Khan was not okay enough. Durgesh Sahu, of course, he got the high five for himself, and not very well coordinated on the defense. So yeah, Marimuthu did it in the morning, has just slipped off in the evening, I felt. जी हाँ नवीन, और बिल्कुल तारीफ करनी होगी एलिमिनेटर नंबर 3 की, बहुत ही अच्छा खेले नीलगिरी नाइट्स। बट हम चाहेंगे शायद पहले एलिमिनेटर नंबर 4 की शुरुआत की बात करें, उसके बाद कोच और कैप्टन को इनवाइट करें। डेफिनेटली तो चलिए, तो पहले एलिमिनेटर नंबर 4 की शुरुआत की बात करते हैं, किस प्रकार से मुकाबला शुरू हुआ। पेरियार पैंथर्स बनाम नीलगिरी नाइट्स। पेरियार पैंथर्स ने पिछला मुकाबला अपना कल खेला था, नीलगिरी नाइट्स ने आज सुबह खेला था। आइए उस समरी की तरफ आप सभी को ले चलेंगे। Yeah, absolutely. No, because Periyar Panthers had that one day of break, as yesterday they're coming in with the break. That is okay. See, again and again, I want to stress this point out and say,
every team of the Yuva Kabaddi series needs to be ready to win 2 matches in a day. Somewhere in some situation you will be demanded of it, and 12 tackle points, and out of which 5 came in for that left corner amazing defender Lokesh Gosalia, and he's gone on to 99 tackle points. That's wonderful feat. But look at that, 14 raid points. Arshit, that has been the problem. The raiders didn't work. Sundar Vishwakannan, Marimuthu, and even K. Harish did not work out. Vasant came in, even he couldn't be doing anything. Even Arvind Rajveeran came out. So all the raiders were tried from the bench, but they could not pull out any points from there. And for me, the biggest strategy is, you know what? Putting out 5 defenders on the match. That is a big achievement there by Puran. That is why the 12 tackle points for the Periyar Panthers. जी और जब उन्होंने जिस तरह से मैच को फ्रेम अप करने की आवश्यकता थी, जिस तरह से मैच को आर्किटेक्ट करने की आवश्यकता थी, तब उनके लिए सब कुछ घटाना। एक बढ़िया सुपर टैकल वहां पर आया, बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आया, उसके बाद ऑल आउट दिया वहां पर नीलगिरी नाइट्स को। तो ये इस मुकाबले की समरी थी नवीन। बट अगर हम बात करें कि पेरियार पैंथर्स जीता है, किसी एक के प्रदर्शन के चलते नहीं जीता। जरूर लोकेश गोसलिया ने बहुत अच्छा आज प्रदर्शन किया, बट एक और चीज थी कि पूरन शेखावत ने अपने रेडर्स और डिफेंडर्स को बहुत ही अच्छी तरह से रोटेट किया। Yeah, totally. I should also say this. Yes, today he was on the move. Puran was really on the move. He substituted everybody at the right time. He knew when to bring in Gopal Singh. He knew when to bring out, Manjeet out. He very clearly put out, when he felt, Brijpal, and when he felt, the right cover is not doing well, Rahul Chaudhary, he took him out. He made sure there's another defender going in. Yeah, brilliant. And that is why, as I said, a deserving team is playing the finals. That's it. जी हाँ, तो बहुत अच्छा मुकाबला था, बट एक और शानदार जब सब्स्टिट्यूट करके इस खिलाड़ी को अंदर बुलाया गया, एक बहुत बढ़िया डुबकी नजर आई थी नवीन। दोनों कवर्स शायद वहां पर कहा था राजाराम साहब ने कि चेन छोड़कर नहीं जाना है, चेन वहां पर छोड़ी, और गोपाल ने उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से अपनी टीम के लिए एनकैश किया। आइए देखते हैं आज के इस कबड्डी कमाल मूवमेंट को। Oh, definitely that is the biggest Kamal where they could win the match. But I have one thing in my mind as the Kamal. We've spoken about it a lot. Yeah, just before this, Rajaram had told not to break the chain. He very clearly said, chain vittu adikiringa. Because before this tackle, Richpal Jat's tackle was very dangerous. It was very near the midline. And even in that tackle, they had left the chain. Rajaram, just on that right moment of the coach's timeout, he very clearly said, "Yan chain vittu adikiringa." That's all he asked. Why are you leaving the chain and hitting out there on the raider? And that exactly what had happened. The error of the cover defenders not going in the chain. या और हमने वो कमेंट्री में शायद उसी टैकल के दौरान बात की थी ना नवीन, कि वो डेंजरस टैकल हो सकता था, बट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आज इस टीम से नजर आया। बट आइए ना, राजाराम साहब की आपने बात की है नवीन, तो राजाराम साहब को इनवाइट किया जाए हमारे समक्ष। We will call him as well, Rajaram and Marimuthu, the captain and coach. Arshit, as they have come in, I'll just hold the mic for you, Mari. அருமையான ஒரு விளையாட்டு இன்னி வரையும், அதாவது இந்த இரவு வரைக்கும் நீங்க வந்து அருமையா விளையாடுனீங்க. ஒரு அணி வந்து 2 போட்டி ஒரு நாள்ல ஜெயிக்கணும் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு உறுதியா தெரியும். ஸோ எங்க தப்பாச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க? உங்களை பொறுத்து என்ன கருத்து வைக்க போறீங்க முன்னாடி? நிறையா பிளான் பண்ணிட்டு தான் வந்தோம். ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் நடந்துருச்சு. அஃபென்ஸும் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்கு. டிஃபென்ஸ் வந்து நல்லா அடித்தாங்க. அவங்கள வந்து குறை சொல்ல முடியாது. டிஃபென்ஸை நல்லாவே நின்று கொடுத்தாங்க. இன்னும் ஒரே ஒரு குறை என்னென்னா, அடிக்க வேண்டிய நேரத்தில் அடிக்கலை. அது மட்டும்தான் அவங்க. நாங்கள் வந்து சேலஞ்சர் ரவுண்டில் ரொம்ப மனசுக்கு விட்டு இருந்தோம். அப்போ எங்கள் கோச் எல்லாத்தையும் மோட்டிவேட் பண்ணி, அடிக்கலாம்டா, நீங்கள் இன்னுங்கடா, ஏன்டா முன்னாடி விளாண்ட மாதிரி இப்போ விளாட மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி 2 கவர் மணி 2 மணியுமே நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணாங்க. அப்புறம் சந்தோஷத்தையும் நல்லா சொன்னாங்க. எல்லாத்துட்டையும் சொன்னாங்க, வேலை வந்துட்டா பொறுமையாக இருற வேலைவா, நீ பொறுமையாக இருந்தனாலே டீம் ஜெயிக்கும்டா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது எல்லாமே கேட்டு அதுக்கப்புறம் நாக் அவுட் மேட்ச் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே நல்லா விளாண்டாங்க, நல்லா அடித்தாங்க, எல்லாமே செஞ்சாங்க. இன்றைக்கி சின்ன மிஸ்டேக்கு, அடிக்க மட்டும்தான் அடிக்கலை. அந்த எல்லாம் டிஃபென்ஸை குறைய இன்றைக்கி சொல்லலை, அஃபென்ஸைஸ் குறை சொல்லலை. ஒன்று டிஃபென்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க. அதனால தான் கொஞ்சம் இப்போ நாங்கள் அதை போட்டு காட்டினோமே அந்த மிஸ்டேக் ஒன்று. அப்புறம் லாஸ்ட் மேனில் ஒரு மிஸ்டேக்கு, அது எதுவும் சொல்கிற மாதிரி இல்லை. Correct. Harshit, very clearly he said the defense breaking the chain and going out there. That has been the problem where, there is where the defense actually went wrong. But Mari, இந்த யுவா கபடி சீரீஸ் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அதாவது இங்கேருந்து நீங்கள் என்ன கற்றுட்டு வெளியே போக போகிறீங்க? கற்றுக்கிட்டது நிறையா கற்றுக்கிட்டேன். நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸு, நல்லா ப்ராப்பராக நடக்குது மேட்ச்சு. யுவா சீரீஸு நல்லா நடக்குது, நல்லா ப்ராப்பராக நடக்குது. அது ஒன்று. இன்னொன்று கற்றுக்கிட்டு என்னதுன்னா, பொறுமையாக இருக்கணும்.
யாருமே எப்பயுமே மனசு விடக்கூடாது. எப்போ கடைசியாக இருக்க டீம் கூட மேலே வரலான்னு ஒரு இதை கற்றுக்கிட்டேன். Adana Valka, Adana Kabaddi. So what he's very clearly learned from Yuva Kabaddi series is never give up. Never give up because any team can come on top. Any team being in the bottom can come on top. That was he's learned. வாழ்த்துக்கள் உங்க கரியர்ல நீங்க நல்லா செய்வீங்கன்னு நம்புறோம். ஐயா வாங்க முன்னாடி. ஐயா இந்த ஒரு எலிமினேட்டர் நம்பர் 4 பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க போட்டு காட்டின அந்த ஒரு தவறை விட்டு, ஏன்னா அதை பத்தி மறுபடியும் பேச வேணான்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த தவறை விட்டு வேற ஏதாச்சும் தவறு நடந்துச்சா? ஏன்னா ரேடருங்க வந்து அங்க போய் பாயிண்ட் எடுக்கல உங்களுக்கு இன்னைக்கு. என்னதான் ஆச்சு இந்த இருவோட மேட்ச் எலிமினேட்டர் நம்பர் 4ல? அவரோட டிஃபென்ஸும் நல்லா நம்ம டிஃபென்ஸ் மாதிரி அவங்களும் ஸ்ட்ராங் டிஃபென்ஸ் தான், அதில் குறை சொல்ல முடியாது. எங்களுக்கு இதே மாதிரி இதே மிஸ்டேக் சேம் லாஸ்ட் மேன் இருக்கும்போது ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் லாஸ்ட் மேன் இருக்கும்போது இதே மிஸ்டேக் நடந்துச்சு. அது மேபி நாங்கள் கூட ரிவ்யூ கேட்டோம், ஆனால் அது ரிவ்யூலேயும் எங்களுக்கு அன்சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு. அதுவும் எங்களுக்கு டேர்னிங் சொல்லலாம், இல்லைன்னா நல்லா நிச்சயமாக வந்துடும். Aruma. So that is what again they are not able to inflict the all out. That has been their problem is what they are saying. So not inflicting the all out at the right time as there's another problem. So உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களும் வந்து இப்போ வந்து முதல் தடவையா இங்க வரீங்க, உள்ள வரீங்க யுவா கபடி சீரிஸ்க்கு. நீங்க இப்போ வெளியில போற நேரத்துல எல்லாரோடைய மனசை ஜெயிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க, அது ஒண்ணு உறுதி. ஆனா என்ன கத்துட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க? ஒரு பயிற்சியாளராகவும் இல்ல ஒரு விளையாட்டு வீரர்களை வந்து நீங்க ஊக்குவிக்கிறதுனாலையும் உங்களுக்கு வந்து என்ன மிகப்பெரிய கல்வியா இருக்கா இந்த யுவா கபடி சீரிஸ்? என்ன கத்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க? நிறையா லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் சார். இதை பிளேயர்ஸுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போகிறோம். இங்கே வந்ததில் இன்னும் நாம் கேமை டெவலப் பண்ணிக்கணும். நம்ம அதாவது டிஃபெண்டர் ஆகிட்டோம், அப்படி ஆகிட்டோம் கேமை எல்லோரும் வேறு டீம்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 1 வீக் கேம்பில் வந்திருக்கோம். இன்னும் கேமை டெவலப் பண்ணிவிட்டு டீம் காம்பினேஷன் இது போதும். இங்கே 32 days இது வரைக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுலேயும் நிறையா லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. இது நிச்சயமாக அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனக்கும் நான் கற்றுக்கிட்டதில் இருக்குது. இதை பிளேயர்ஸுக்கு நான் போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அடாப்ட் பண்ணுறது யுவா கபடி சீரிஸ். Not just as a player, but as a coach also, he's learned how to coach different teams, how to motivate the teams when they are very low. That is what Yuva Kabaddi series does. கடைசி கேள்வி நீங்க போறதுக்கு முன்னாடி, இப்போ இங்க இருந்து இதுல இருந்து மேல்கொண்டு எந்தெந்த பிளேயருக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்புங்க கிடைக்கலாம் யுவா கபடி சீரீஸ்ல இந்த மேடையில இருந்து மேல போன பிறகு எந்தெந்த பிளேயருக்காவது வாய்ப்பு கிடைக்கிறது எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க? அது வந்து யுவா கபடி சீரீஸ் மூலியமா, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நல்ல பிரபலமா இருக்காங்க, நல்ல பேர் வெளியே வந்திருக்கு. ஸோ நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்க போகுதுன்னு நம்புறீங்களா? என்னோட டீமில் தானே கேட்குறீங்க சார். என்னோட டீமில் நிச்சயமாக வாய்ப்பு இருக்குது சார். நல்லா ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க சார். இந்த சீரிஸ் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சர்வைவல் 1, சர்வைவல் 2, டாப் டீம் டஸ்கர் டீம், பழனி டஸ்கர்ஸ். செகண்ட் டீம் வந்து நீல்கிரி நைட்ஸ் எங்கள் டீம். அதே மாதிரி பூஸ்டர் ரவுண்டில் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டில், அதே மாதிரி சேலஞ்சர் ரவுண்டில் 5th place போயிட்டோம். அதை ரெட்டிஃபை பண்ணி நாங்கள் 5th place போனதுனால இப்போ எவ்ரி மேட்ச்சு நாங்கள் ஆல்ரெடி எலிமினேட்டர் தான் 3 ரவுண்ட் 4 ரவுண்டு நாங்கள் எலிமினேட்டர் தான் ஆடி ஆகணும். அது 3 ரவுண்டு எலிமினேட்டரில் வின் பண்ணிட்டோம். அதான் 75% வின் பண்ணியாச்சு. நான் பசங்களை மோட்டிவேட் பண்ணது, பிளேயர்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணது அப்படி தான். இன்னும் ஒன்லி 25, ஏன்னா இப்போ நம்ம போகிறது நம்மளோட டார்கெட் ஃபைனல். அப்புறம் ஃபைனலுக்கு பிளான் அப்புறம். நம்ம முதல்ல இதை தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஃபைனலை பற்றி பிளானே பண்ணலை. இது 75% ஆனால் இப்போ அதில் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக. ஸோ கடைசியாக இறுதி போற்றி இப்போ பழனி டஸ்கர்ஸும் பெரியார் பேந்தர்ஸும் விளையாட போகிறாங்க. இளவரசன் உங்கள் தம்பி மாதிரி அப்படின்னு கூட நாங்கள் நினச்சிக்கலாம். இளவரசனுக்கு எதனா சொல்கிறதா இருக்கா? பெரியார் பேந்தர்ஸோடைய எதனா ரகசிய கேஸ் எதாவது விட்டு கொடுக்க போகிறீங்களா? ரகசியம்லாம் எதுவும் இல்லை சார். நிச்சயமாக எல்லோரும் பிளேயர்ஸை நானும் இப்போ எல்லாம் பார்த்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிச்சுட்டு வரணும். நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பாங்க நம்பிக்கை இருக்குது சார். சூப்பர், ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். வாழ்த்துக்கள், நல்லா விளையாடுங்க உங்கள் கரியரில். நன்றி. ஸோ ஈ செட் இளவரசன், yeah, all the very best. Be careful, Palain Tuskers are coming against you. जी हाँ, बहुत ही दिलकश और बहुत ही दिलचस्प वो भी मुकाबला होगा. बट नवीन, जैसा कहा ना हमारे मुत्तू की, उससे पता लगा कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर. और सीखने की अगर हम बात करते हैं ना, तो युवा कबड्डी सीरीज से जिस खिलाड़ी ने बहुत ज़्यादा सीखा है. हालांकि इन्होंने कबड्डी की जो शुरुआती 7 साल पहले राजस्थान जयपुर के चौगान स्टेडियम से की थी. रोज 25 किलोमीटर बाइक चलाकर लगातार दूर जाना, प्रैक्टिस करना, सुबह शाम रात. बट जिन्होंने युवा कबड्डी सीरीज में आकर असल लॉन्च पैड प्राप्त किया वो थे लोकेश गुसलिया. और इनके पूरे टीम में एक वो यकीन का टिकट मिला है. बट नवीन, आप जानते हैं कि कोई भी टिकट फ्री में नहीं मिलता है, उसमें कड़ी मेहनत की फीस लगती है. और अब बात कर लेते हैं उसी खिलाड़ी से. तो आइए लोकेश गुसलिया को आमंत्रित करते हैं. और सबसे अच्छी चीज है नवीन कि इनके पास जो ब्लू स्लीव है ना, वो इनकी जो पैंथर्स की आंखें, जरूर हमारे जर्सीज कई बार हम देखें तो ये पैंथर्स के साथ ये जो परफेक्ट जो ये ब्लू स्लीव है वो बहुत मददगार है. और जब से ये लोकेश गोसले के हाथ में आया है, किसी और के हाथ में वो गाया नहीं है. और आज थोड़ा मैं कमेंट्री में देख रहा था, मंजीत के ऊपर जब वो थोड़ी सी गलती कर दी उन्होंने, तो आप लोकेश गोसलिया से लोकेश गुस्सलिया हो गए. बहुत गुस्सा कर दिया आपने. क्या हुआ था वहाँ पे? हाँ जी, वो तो मैच में मतलब गलती तो होती है, मतलब समझाना पड़ता है खिलाड़ियों को, ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट नहीं करते, मतलब कोई बात नहीं, गलती हो गई, आगे से मतलब कम करना अंदर खिला रेडर को. सही है. और कभी सोचा था
99%, मतलब 99 पॉइंट आपने ले ली टैकल में, खाली एक टैकल पॉइंट बाकी है। 100 टैकल पॉइंट किसी डिफेंडर ने नहीं किया अभी तक युवा कबड्डी सीरीज के इतिहास में। क्या ऐसा लग रहा है आपको अभी? तो देखते हैं क्या होगा, कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएंगे आराम से। क्या बात है, एक बार और ही कारनामा कर चुके हैं नवीन लोकेश गुस्सेलिया। 100 टैकल पॉइंट्स एक ही सीजन में प्राप्त करने का कारनामा और एक बार कर चुके। बट लोकेश, अगर हम बात करें ना, फिर से वो 5 डिफेंडर्स की स्ट्रेटेजी आज की टीम में फिर से नजर आई, तो उस स्ट्रेटेजी पर कैसे आप थोड़ी सी और वार्तालाप करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मतलब डिफेंस में मतलब सेकंड मैन की कार्रवाई हम मोनू को अंदर खिलाते हैं भाई। सेकंड मैन जो बोनस रेडर मारेगा, बोनस, और जो मतलब सामने टेक मारता है उसके बैक मारना, जो हम मोनू को मतलब हौसला दे के रखते हैं कि भाई तू आराम से कर सकता है ये चीज़। वो भी लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे खेलता है भाई, एक आउट हो जाएगा तो मेरी जगह आराम से वो खेल सकता है। सही है। और जाने से पहले, क्योंकि कल आप मैच से पहले हमसे बात नहीं करोगे तो पूरे मैच के तैयारी में रहोगे फाइनल्स, तो अभी भी बता दीजिए कि पालनी के खिलाफ आपके मन में क्या चल रहा है? बहुत सारा प्लानिंग तो होगा, 1-2 तो बोलना ही पड़ेगा। ये मैं जवाब नहीं मानूंगा, कल मैच पे देखेंगे। वो नहीं, मैं नहीं मानूंगा ही नहीं मैं। तो आपके मन में 2 चीज ऐसे क्या है जो आप उनके खिलाफ यूज करना चाहते हो? ये उनके खिलाफ तो यही है कि उनका रेडर, लेफ्ट रेडर है जय सूर्या मैन, तो उसको रोकना। अगर हम उसको रोक गए तो हम मैच आराम से जीत जाएंगे। वाह, सिंपल, सुपर, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा कीजिए। और पहली चीज, कल 100 टैकल पॉइंट पे आप खड़े उतरेंगे, वो मुझे पता है। अर्षित, we'll wish him all the best. थैंक यू सो मच लोकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नवीन, जितनी स्मूथ टैकल्स कहते हैं ना, उतनी स्मूथली इन्होंने आंसर्स कर दिए। Arshit is not even fair. 99 tackle points. हाँ, कल 1 पॉइंट है, हो जाएगा। Simple. It's like, you know, every time you get in mathematics 99, you getting 100 is okay. That's what he said. जी हाँ, पर मैच बहुत ही मजेदार था नवीन, और बहुत ही अच्छी तरह से मैच को बनाया गया था, बहुत ही अच्छी तरह से बुना गया था। और जैसा कि आपने कहा ना कि वेल डिजर्व टीम फाइनल तक पहुंची, दोनों ही टीम पलनी टस्कर्स और पेरियार पैंथर्स। मुझे लगता है कि पी में ही कुछ कमाल है नवीन, पलनी टस्कर्स, पेरियार पैंथर्स। बट क्या वो पी की हम बात करें, हम बात करेंगे बाद द एक्सपर्ट क्वेश्चन की नवीन। Yeah, my God, really. I mean, see, thanks once again for that man who actually gave us that idea of putting out all the commentators together. And somehow it suddenly struck me when we saw what is your best 7. And then tomorrow in the finals, I think you know, we have some surprise. Let us not break what the surprise is. Yeah. You know, I think we are going live at maybe 7 o'clock. 7 p.m. We might go live at 7 p.m. Even if 8 p.m. is the match, we might go live. Our streaming on FanCode will start, might be at 7 p.m. So watch out for some big surprise. We are going to do something which we have never done in the Yuva Kabaddi series, and hopefully we will be able to pull it off. जी हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से हम आप सभी तक रखने का प्रयास करेंगे। और नवीन, मैं तो देखिए आज रात में नहीं सोने वाला हूँ, मैं तो काम करने वाला हूँ इस पर पूरी तरह से, और मैं चाहूंगा कि हम हमारा सर्वश्रेष्ठ दें। बट अभी जो आज की एक्सपर्ट में प्रश्न आया है वो शायद अजय रेड्डी की तरफ से आया है। इफ यू हैड टू कंपेयर कैप्टन लाइक आकाश शिंदे फ्रॉम द पुणे एडिशन, हु वुड दैट कैप्टन बी? Oh my God, no one. आकाश शिंदे के नहीं, लोकेश गोसलिया का जैसे मतलब वैसे उन्होंने जैसे जवाब दिया, मैं भी एक ही वर्ड में। अरे भाई, you can't compare. I mean, come on, listen. You can compare with apples and apples. You can't compare with apples and mangoes or dates. You can't do that. It's apple is apple. Yeah. Akash Shinde is an apple. He's a very costly fruit. He'll be there. And nowadays in Karnataka, tomatoes become very costly. Not even in Karnataka, Naveen, in पूरे India में. Exactly, entire India. So right now, Akash Shinde is our tomato. You can't compare tomato with anything. So there is no captain who can be compared with Akash Shinde. That's what I think. अनडाउटेडली वहां पर, क्योंकि आकाश शिंदे एक अलग फोटे अपना लेकर आते हैं, और उनकी एक अलग टीम थी नवीन। उनके पास वो रिसोर्सेज को उन्होंने ऑप्टिमम यूज करके दिखलाया। और अगर हम कैप्टन की बात करें तो निश्चित तौर पर हमने कल भी बात की थी कि बहुत सारे कैप्टन्स इस समर एडिशन में हमें नजर आए युवा कबड्डी सीरीज में। Totally. And that is how they grow, isn't it? That's what I wanted Durgesh Kumar also to grow as a captain, but he couldn't grow. See, again, there is a little bit of a problem where captain is a captain. He's just one in a team. Everybody can't do that job, isn't it? So, yeah, but Akash Shinde, just uncomparable, Arshit. Uncomparable. जी, अनकंपेरेबल है बिल्कुल। बट जैसा हमने बात की ना कि इस पूरे चामुंडी विहार के मैदान में, इस इंडोर स्टेडियम में एक इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी हम सभी को महसूस होती है जब कोई भी टीम चाहे खेलने आए। कबड्डी को बहुत सारा प्रोत्साहन देते हैं नवीन, क्योंकि अब समय हो चुका है कि हम वंडरफुल वेडनेसडे की बहुत ही वंडरफुली तैयारियों में जुड़ जाएं। बट आप सभी को छोड़ जाएं एक बहुत ही मनोहर दृश्य के साथ, जहां पर आप देखेंगे कि कितना क्राउड आता है। और हम आप सभी से भी निवेदन करेंगे कि आप सभी भी चाहे जहां कहीं भी हो, जल्दी से जाइए, अपनी टिकट्स बुक करनी हो तो टिकट्स बुक कीजिए, क्योंकि कल समय है हमारे पास 8 बजे शुरू होगा फाइनल का कबड्डी मुकाबला। बट 7 बजे हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे। And also, once again, everybody watching us live and exclusive on FanCode,
whichever part of the world you are. This is a world streaming, platform that's going on everywhere. Thank you so much for giving us your time. And time is love today. So you're giving us your time. Thank you so much for that. So good night, take care.